you were thinking about it very differently. मैं खाली था अमेरिका में, मैं क्या करूँ, right? And my view is Americans by nature are so lonely and so much of their time is spent being alone. So for instance, मेरा एक रूममेट होता था, ट्रक ड्राइवर था वो, ठीक है, वो 16 घंटे ड्राइव कर रहा है भाई दिन में, रोगन सुन रहा है. Now the difference between Rogan's conversation as opposed to anybody else's is one, it's free flowing. He will have you on, he'll read your book, he'll see what your bio is and he'll sit and talk. उसको नहीं बनाना कंटेंट, ही इज टॉकिंग. और उस टॉकिंग में कई बार he'll go on a long rant, he'll say something, he'll repeat those points. Ayahuasca was a big thing. वो कहता है ना, have you tried ayahuasca? That became a meme. People need values. As soon as the value is there, people will align themselves around it. So that is how Rogan became a cult, because he had so many hours to speak in the middle of his guests answering questions. But in contrast, I think Andrew Tate has a bigger cult. And I think the minute Andrew Tate is free, he will be on Joe Rogan. What do you think? Maybe. He will do crazy stuff, right? There was in fact, एक वो reel चल रही है बहुत ज़्यादा, where they say that कि कोई एक particular streaming platform है, वहाँ पे वो आएगा, जैसे जिस दिन बाहर आएगा, उस दिन वो streaming platform पे आएगा, and the DAOs and MAOs of that platform will be through the roof. The entire world would want to go and see his live stream कि वो बोल क्या रहा है आके. तूने have you been seeing his tweets from jail? जेल से ट्वीट कैसे कर रहा है? तो वो ना, उसको I think he's allowed to write a newsletter. तो he's been writing a newsletter, accumulating following there, और उस newsletter के segments end up on Twitter. ठीक है? Because that's the only social media he's allowed on mainstream. And bro, each of those tweets is retweetable. Like I've done enough content around Andrew Tate to put my problems about him across. I've had my shit. But he understands. Bro, उसने पता है recently क्या बोला? कहता है मैं $100 million अपनी will को change करके donate कर रहा हूँ for a charity that helps men who are accused without a reason. Yeah, क्या solid PR move है bro. That I saw. सब लोग भूल जाने हैं उसके क्या crimes हैं और क्या crimes नहीं है. The platform you're mentioning is Rumble. He does emergency meeting. हाँ. और वो emergency meeting में जहाँ वो नंगा बैठता है, कोई मसाज कर रहा होता है, उससे वो बात कर रहा होता है. But what do you think about him? I don't know, man. Like I feel his few views are just, they disgust me. मतलब it's just like, so you know, मेरे साथ Andrew Tate का ये हुआ कि people say there's a good side of him, there's a bad side of him, like from the content point of view कि कोई एक side उसका बहुत sensible करता है, एक बहुत बेकार sense करता है, right? My point is कि I got on a wrong foot. मैंने देखा ही उसका misogynist content. तो मुझे day one से मतलब वो ऐसा था यार मेरे को पसंद ही नहीं है. So that is the kind of vibe I got. And then I anyway kind of dislike people who are in every line who bring their wealth. So मेरे को anyway मतलब वो it's just a personality trait की. North Indians है ना, हमें पता है क्या होते हैं वो लोग. हाँ मतलब हर ही लाइन में तुम बता रहे हो मेरे पास बुगाटी है, मेरे पास गुच्ची है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है. So that मैं इतना बड़ा, you know, I have like I'm a chick magnet, I'm this, I'm that. So starting से because I saw that content first, so मैंने उसको डिस्कस ही कर दिया, तभी मैंने कभी व्यूज़ बनाए नहीं अपने. So जब भी वो आता था मैं हटाओ. I think मैंने उसकी सिर्फ एक ही क्लिप देखी थी which I liked and which I agreed on. कि the clip was, I'll tell you 2 ways to make money. First is get addicted to social media, and second is produce content on social media, not consume. Okay, to me that was like really good thing कि हाँ भाई ये, क्योंकि I also say the same thing that become producer of the thing which you consume the most. And there's like basic stuff जो worldwide new generation में, this is how you make money. So that's the only thing which I liked about him. That's one reel. उसके अलावा मैंने उसका जितना content सुना है, या तो reel भी ऐसा है, वो algorithm ही ऐसा है कि मुझे सब बेकार दिखाता है. तो I feel just like मेरे को disgust करता है more than anything else. It's not, I mean he deserves what he's getting, like that kind of stuff. Right. It's a little too polarizing. It's too यार more than polarizing, I think I'm not well suited enough. Like I'm not well suited or I'm in a position where I can give my opinion on him. क्योंकि मैंने इतना देखा ही नहीं है. अगर मैंने देखा होता, बहुत कंज्यूम करा होता तो मेरे को एकदम बढ़िया व्यूज़ होते और मैं बताता कि क्या पोलराइजिंग है क्या नहीं है. मैंने स्टार्टिंग से देखा बकवास बातें करता है, इरिटेटिंग, अनोइंग. तो मतलब क्या है यार, लाइक डूड, दीस काइंड ऑफ पीपल आर नॉट रियली गुड influencers. Good influencers. Like that's what I would say. I will say though, मैंने ना, as I've grown up bro, I'm 27 next week, right? And it is 27 is about the age where you start thinking about 30 very loudly, right? Before that you are like whatever, I'm 25, अभी तो मैं 20 का हूँ, like you know, you're probably not you are a more sincere fellow than I am, right? And I found as I've grown up that
truly the most under discussed topic around me is the pain of men. Right? And kya hai? What is that pain? I think that is the sweet spot Andrew Tate manages to hit with his content, which is why he's probably this successful. This is an explanation, not a justification for the nonsense he says. Just by the way, my views on him are very clear. I think the 20% nonsense that he says negates the 80% good stuff that he can probably bring. We had this conversation. We've had this conversation, right? Yeah. But hai kya, bro? The amount of silent, painful effort you have to put in as a man every day to keep your family together, the defense you have to bring in times that are tough, when shit is upside down and you have to stand there tall without crying, that is a pain nobody really talks about openly. And I think the injustice is when you start comparing it to female pain, because that's a completely different category, as valid as male pain. But modernity, technology, the demands of our time in terms of discourse and ideas has rendered this topic completely useless. So, do you not get questions of this nature? Because in my DMs, I get a lot of these questions where guys are trying to figure their stuff out. You are figuring out, Ko. I'm not. But like, what are the kind of questions you get in your DMs? Dude, I tell you, I have certain views about how men and women are and everything around that, right? I'll tell you one thing which I really, really feel. I think it's not about, I don't know whether it's right or wrong or who's doing it or who's not. The idea is, I'm just against the idea that men and women are same. And that's what I just don't like. Like, everybody's trying to say, women go through their own pains, men go through their own pain. That's the whole idea. और हर कोई बोल रहा है कि अरे हर चीज़ में equality लाओ, हर चीज़ में ये लेके आओ, हर चीज़ में वो लेके आओ. I'm like, no bro. Like, we're just completely two different individuals, and the way we've been brought up is so different as well. And I'll tell you where I'm coming from, or why and how did I come on to this. So I've always seen my mom, and she was like the strong personality in my house, and she was like super empathetic. So every day for me, it was just, how do I win her? Because she was always like just giving, she's this person you can look at. Obviously this is every mom, but the personality trait bhi hota hai na. So my mom is like giving, she never wants anything from anyone, even from different people. I forget their kids. So I always felt like मैं उनको क्या दूँ, like what can give her happiness. So that put me on a life quest where I tried to understand women more than I tried to understand myself or men, right? And that's why when I try to understand them, and one thing which I found out, and uski वजह से I think I got a better understanding of men as my brother and my sisters and everything, because or my age in my house, my sisters are kind of my age. My brother is quite younger to me. And my sisters were not allowed to do the same thing which I was allowed to do. Okay. Now they all are. But the way we were, growing up, and my grandfather and my grandmother, the way they were... Society is traditional, na? तो बहुत ही different था. It can as simple as कि मैं रात को 3 बजे तक पार्टी कर सकता हूँ, मेरी sisters नहीं कर सकती. So to me that was like, why, what? तो मैं बचपन से ऐसे था कि इनके साथ ऐसा क्यों होता है, इनके साथ ऐसा क्यों होता है. Okay. And something which I found out, which became the premise for me to understand men and women. Okay. Men are always objective driven. Women are always feelings driven. And to me that was so fascinating to just talk about everything. तभी there'll always be a debate about men कि उनका pain और उनकी feeling कोई नहीं समझता है, women कि उनके career और उनकी empowerment stories कोई नहीं समझता है. तभी हर जगह इनके ऊपर ही debates होती है. Because if you look at the way we've been brought up, बचपन से ही, I'm talking about my society, I'm not generalizing everything, I'm just talking about the place I come from. तुम्हें बता दिया बचपन से ही तुम्हारा objective होता है. तुम बड़े होके फैमिली स्टार्ट करोगे, तुम्हें पैसे कमाना है, तुम्हें घर का टेक केयर करना है. सो यू आर सो ऑब्जेक्टिव ड्रिवन दैट यू आर ऑलवेज सीकिंग योर अटैचिंग योर हैप्पीनेस टू एन ऑब्जेक्टिव. तुम बस ये सोच रहे हो कि भाई मैं अगली चीज़ अचीव करूँ, तब लोग खुश होंगे, तभी उनको मेरे सक्सेसफुल होने के चांसेस दिखेंगे. सो डे इन एंड डे आउट यू ऑलवेज बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर हु इज ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव. वेयर एज वुमेन देयर उनका पूरा गेम ही अलग होता है. तुम्हें परिवार संभाल के रखना है, लड़कियां ऐसे नहीं करती, ऐसे करती है, बेटा तुम्हें तो सॉफ्ट होना है, तुम ही तो इनमें सेंस भरती हो, राइट? दिस इज द कॉन्वर्सेशन विच गोज ऑन विद देम. सो फ्रॉम डे वन दे हैव बीन टॉट टू फील, फ्रॉम डे वन men are taught to earn the bread.
एंड जिसकी वजह से तो बचपन से सिखाते आते हैं, तो जब बड़े हो गए, अब लड़कों ने हमेशा लाइफ टाइम सिर्फ इस पे फोकस किया कि मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कैसे लेके आऊँ, एंड लड़कियों को बार बार फोकस करवाया इस बात पे कि तुम और बेटर फील कैसे करो और बेटर शेयर कैसे करो, बेटर आई टेल यू बेसिक कॉन्वर्सेशन. Mom and daughter, they talk about their feelings and the struggles while growing up. Father and son, they talk about how the son's gonna be as eligible as father or maybe better. Right. And these are the basic conversation which happens in every family. Most of the families, specifically the place where I come from, right? तो इसकी वजह से ऐसा होता है, पूरे गेम में ऐसा बन गया है. अब हम बड़े हो गए, हमने ऑब्जेक्टिव, हम बन गए मिस्टर get your shit together. हाँ. I don't know whatever the word is, like हम objective achiever, that is हमारी हर चीज़ goals objectives है. अब जब life is life, we are emotional creatures. जब हमें इमोशन कुछ होता है, कुछ थोड़ा पेन वेन डील होता है, हमें पता ही नहीं इसको डील कैसे करना है, हम किसके थ्रू जा रहे हैं और हम किससे बात करें, क्या करना है, हमें पता ही नहीं. इसकी वजह से अब अंदर ही अंदर हम सप्रेस हो रहे हैं. तो जैसे कोई आके इसके बारे में बात करता है ना, वी फील डैम बॉय. I'll tell you what I think about this because you're same spot on. लड़कियों के साथ होता है. Okay, I'll tell you same, because लड़कियों के साथ feelings. The moment now, because they also have a career, they want to do things. The moment they want to do it, and they're like, अब हम इससे किसके बारे में बात करें, क्या करें, they don't know. The moment somebody talks about it in society, that person becomes like the role model for them. So इसकी वजह से, that's why we both have opposite role models. So you think about the heat सबसे ज़्यादा कौन सी इन conversations को मिलती है. मैन की कॉन्वर्जेशन में हीट तब मिलती है, अचीवर्स को नहीं मिलती है. वो मिलती है जो पेन की बात करता है, हैंडलिंग स्ट्रगल्स की बात करता है, राइट. लड़कियों में सेम होता है, जो करियर की बात करती है, नॉट इमोशन की ज़्यादा बात करती है. Bro, so super spot on. So पहले तो I think this will help people whoever is watching to make this point clearer to themselves, because I agree. Men and women are not the same. Yeah. They might be equal. They should be equal. I'm completely in agreement, but same and equal are not the same. True. They're different words, right? And you need to understand this vocabulary. This is why being able to speak well and understand things in language well is important. ताकि तुम categorization properly कर पाते हो. You don't get lost in other people's agenda. Number one. Number two, I think it's not men versus or men and women. It's masculine versus feminine. Masculine and feminine. True. Right? True. So, and we inhabit both qualities. Like, I know men who are very feminine in nature. Right, who have their feelings and their aesthetics and all of those things very put together. I am not one of those people. मेरे को तो क्या कपड़े पहनने वो भी उसके लिए bro find me somebody like, and this is the least right, like you know what I mean. तू hoodie पहन के आ गया, jacket पहन के आ गया, and this is so common where men are never taught how to deal with their feminine properly. Because as they go about their masculine enterprise, the feminine will go together. The struggle and the pain will come, and you do not know how to handle it. Like so often, bro, I'll have my pains and I do not know how to talk to my friends about it. At this point, I texted my friends while I was flying into Bombay. Flights उतरते, I was like, look, we need to have a meeting. All of us need to sit down. We've been friends 10 years and we need to make intent appear in our friendship going forward if we all want to win. And part of that agreement will involve some amount of feminine input. Where it's like, bro, अगर कल को मेरे को दर्द है, मैं शर्माना नहीं चाहिए तेरे से बात करते हुए. यार हमें 10 साल हो गए दोस्ती को. Right? Because that will happen as we grow. And for women, very often, I see this with my mom, right? My dad was a brilliant support. I think I have so much respect for my father for being there for my mom in that way. Where my mom has more, let's say, formal power than my father does, right? My mom became a role model for every single woman in the family. So quickly. I didn't even realize मैं तो छोटा था. But all didis, all cousins, all buas, everybody started coming to my mom. क्यों? Because उन्होंने अपना masculine properly own up करके she went about her career. And now when society pushes women, rightly so, because you better be financially independent or you're going to go through shit. They don't know what to follow. Representation को लेके debate होती है ना bro, कि क्या ज़रूरत है representation की. If I knew a single content creator in America who'd made it, my journey as a content creator in America would be so much easier. Because representation matters, right? And so this is why probably the role models are opposite, where for women, role models tend to be more masculine women. And for men, role models tend to be men who can express their femininity and deal with it properly. True. And I think it is such an interesting time for this debate to be had properly. I think
say what you want about Andrew Tate, he did open the door for this conversation very loudly. The books we read, है? मैंने नहीं देखा वो हाँ, मैं समझ रहा हूँ. Andrew Tate का, तभी मैं, that's what I'm saying, that maybe he opened up that side, and now that you're saying that, I'm pretty intrigued to know that. I'll tell you why. Because मैं देखा ही नहीं. All I saw was, I never saw him talking about pain of men. The way you're expressing right now, he sounds like okay, उसको कुछ पता है. मैंने जो देखा ना, तो ऐसा घटिया कंटेंट देखा, ब्रो व्हाट द फक, लाइक बैन करो. प्लेस होल्डर है ब्रो, उसको प्लेस होल्डर समझ ले. मैं कह रहा हूँ उसको डिस्कार्ड कर दे इक्वेशन से, ठीक है? हम कंफर्टेबल हो जाते हैं इस चीज के बारे में बात करने के लिए अगर टेट आउट ऑफ द वे, बिकॉज उसके ही इज कॉम्प्लिकेटिंग एज अ क्रिएचर, राइट? आई विल से व्हाट आई एम सेइंग इज कि आई हैव रेड all of this has come across my literature reading since I was 20. The books I've been reading, the people I've been meeting, the circles I've been in, the conversations I've had, this has been a topic, but nobody spoke about it openly. True. With him saying all of this so loudly, opening the door in even if an ugly way, what this has done is people are now like, this is actually true. I heard an opinion about Tate, which was so interesting. Somebody said the content he makes is essentially for women to consume, to understand their men properly. Oh. But he packages it in such a way that women will see, be like, disgusting, hatao isko. And so it never reaches the right audience. True. And that was such a brilliant insight. I was like, that's so interesting, bro. Packaging. Because packaging भी तो game है. Packaging भी game है. Packaging. It's attracting the right audience. I tell you, एक चीज़ बताता हूँ, देखो. हाँ. Something which I was gonna write content on this, but ठीक है, मैं तब properly frame नहीं कर पाया था. But I'll tell you, you know, because men are always told that their worth is gonna be calculated based on how good they achieve. Okay, and women are always taught how good they feel. So बचपन से उन्हें सिखा रहता है कि have good feeling. That's why उनका हर चीज़ is they always trying to be, they are better feelers. And that's why men, उसकी वजह से men का ऐसा होता है कि they're not better feelers. So इसी वजह से हम लोग हमेशा as men we are finding people who can feel better, and as women we are trying to find role models who are better achievers. So full time तुम बस उसकी वजह से अपने role models दूसरे देखते जाते हो. The way society is teaching us. एक classic Bollywood trope अगर तू कभी notice करेगा ना, प्यार कब होता है, ठीक है? बंदी के साथ बंदा देख रहा होगा बंदी को, बंदी बारिश में नाच रही है, उसने अपना छाता फेंक दिया है और वो बस नाच रही है, शी इज इन एक्सप्रेशन मोड कंप्लीटली, एंड द गाय इज लाइक, ओह तुम कितनी सुंदर हो. और बंदी के साथ क्या होगा, बंदा लगा हुआ है, या तो लड़ाई कर रहा है या काम कर रहा है, ठीक है, भाग रहा है यहाँ से वहां, और बंदी उसको देखती है और बोलती है वाओ ये कितना सही है. एंड दोज आर द ट्रोप्स अराउंड लव दैट वी फॉलो एज वेल. सो that's society, that's what we've been taught since the beginning. Since the beginning we've been taught about all of these things only. So as men we want to find, we should, like, we find people who feel themselves in a better way attractive, and as women we find people who are like better achievers. Do you cry? Of course. Yeah. How like how okay are you with crying in general? I'm pretty okay. Acha. That's never been a problem. That used to be a problem. Acha. When I was a kid. But I think my dad, my mom, everyone's like a good feeler in my house, in my society. So everybody is like pretty, they express their emotions freely. So इतना कोई problem नहीं आया. But because school में जब था 12th 1 तक, you know how the fundamental need as a young boy, as a teenager, is power. Right? That's, I don't know, even I should call it fundamental. No, it's just like innate need. Cool बनना है सबको. Cool बनना है, सबको power चाहिए. सबको वो चाहिए कि भाई मैं लौंडा हूँ, मैं powerful हूँ. इसीलिए 17-18 साल में लोग जिम वहाँ से स्टार्ट करना है, बॉडी बनानी है, फिर धंधे बनाने हैं, सब करना है. मतलब हमें जो हमें वो कूलनेस दे दे, right. जो हमें पावर दे दे, जिस, ठीक है, तो पावर कम फ्रॉम ईदर फेम, मनी और कैरेक्टर. तो तुम्हें तीनों में से तुम ड्रिबल करते हो, कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए. सो माई आइडिया वाज कि ओके मैन आर मैन, सो क्यों रो सकते हो, तुम दिखा नहीं सकते हो, यू आर टफ. इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम व्हेन हार्वी स्पेक्टर, आई यूज्ड टू वॉच हिम अ लॉट, सूट्स, ओके, उसमें वो एक लाइन बोलता है, आई एम नॉट अगेंस्ट इमोशंस, आई एम अगेंस्ट हैविंग देम, नॉट अगेंस्ट यूजिंग देम. ओके. So masculine. Okay, dude, that became my thing. I was like, of course, bro. I don't have emotions. मैं cool बनने की कोशिश कर रहा हूँ. I was like, yeah, I don't have emotions, because Harvey Specter in my head was the most successful masculine image, like a role model who you ever want to become in your career, right? और वो इतना वो कभी अपने emotion दिखाएगा. Like वो stone faced, बिल्कुल. हाँ. पूरे टाइम I was like, no, right. मेरे को कोई फील नहीं होता. Achievement, goals. तो मेरे को वैसा cool बनना था. तभी उस टाइम मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी. But I was, forget crying, I was forcing myself to not show my soft side to other people as well. Bro, even happiness, like I've seen men who get so hardened they don't want to show happiness. Yeah, that's what I'm saying. I was not showing any emotion because
I thought Harvey Specter बोला I'm against having them, तो even I'm against having them. But do you not think that's a colorless life at that point then? मतलब वो did you struggle against that? उस टाइम पे तो कुछ था ही नहीं ना, ऐसा सोचना ही नहीं था. उस टाइम पे तो रोल मॉडल था, वैसा बनना है, right? And then later I realized कि okay, I mean the idea is what I want from this. Okay, why do I want to be emotionless, or why do I want people to perceive me in a way, right? और फिर एक क्वेश्चन आया, do I want perceived value to be different than who I really am? I didn't want that. I was like, okay, if I want other person to perceive me in certain way, I want them to understand me in certain way. Let them understand me for me, and they can only understand me better when I show my emotions. They cannot understand me better by not showing emotions, and that's where the thing started, because I wanted my girlfriend to understand me better, my father to understand me better, my mother to understand me better, my brother to understand me better. So it became a thing that I was trying to, just getting back to normal. And then I feel that's how, then I got okay with like, I was not okay, for the longest I was not okay with anger. Not showing anger. Not showing. मैं लोगों के सामने anger नहीं खाता, क्योंकि I was like this cool, मेरे को इन सब बातों से फर्क ही नहीं पड़ता. तुम्हारी टुच्ची बातें ना मेरे को गुस्सा नहीं दिला सकती, that kind of thing. And in my head I'm boiling, I'm like मार दूंगा मैं, मतलब फेंक दूंगा किसी को कहीं से, right? But I'm not showing. But I thought like, what's the problem in showing anger or love or happiness or sadness or crying? Like, क्या problem? I read a quote right now, अभी जब मैं टैक्सी में आ रहा था, about anger, and it was so brilliant because bro, I've never believed this. I think maybe instinctual thinking is pretty on point with stuff like this. But anyway, people, how they say anger is bad for you. It is like holding a knife and hurting yourself and this and that and all that nonsense. And I'm like, how can it be when it's so natural for people to have anger? And the quote said, anger is, let me see. He said, anger is a privilege for the strong, duty for the righteous, and self-harm for the weak. And I was like, that's brilliant to understand that if you are strong, you must only use anger as a privilege only when it is important. And if you're righteous, you must use it as a duty because it must be exercised for righteousness to arrive at manifestation point. And for the weak, it is self-harm. Most people tend to be weak people. Most people tend to hurt themselves with anger. But the strong know when to use it properly. And that is the element of grace. So, jaise, and it's probably a sort of a callback to Andrew Tate, What I want to conclude that thing, yeah, okay? Please. So, just saying conclusion. कि पहले जो I used to believe that I'm against having emotions, right? Now I'm against losing control over emotions. I want to be in control of my emotions. That is now my new thing. Because the same thing which you said, because I feel जो self harm वाला तूने बताया कि for the weak, for the righteous, for the strong, people, yeah, right. Like जो भी बोला, that's so spot on, because it's not just with anger, it's with every emotion. Having control over your emotions is I think everything. Is something which makes you an achiever, and that's the point. An achiever, by I mean achiever not only just a monetary way, in relationships and personal attitude, friendship, everything. So if you know how to control your emotions, yeah, that's it. Yeah, I think to go back to the brutish warrior personality, there is also this book called King Warrior something karke, agar somebody wants to Google it, which talks about 4 different categories of masculine personalities. And it's funny, all of this is like I read at 21, it's now coming back because it's relevant. But you don't want to be a brute, bro. You don't want to be savage. You want to be a king. You want to be noble. And noble people have their shit in control. Not just in order, but also in control. You're not just strong. Yeah. You're strong with a purpose and intent. Exactly. And self-control and grace. Spot on. Yep. Spot on. I'll tell you one insight. इससे पहले जो तूने बोला ना कि you read all of these things at 21. Okay, there was a study which I was reading. Why one of the best readers in the world are not powerful instantly? Because they're ahead of their times. Bro, that's so encouraging. Thank you so much for saying that. And that's why in hindsight, everything connects for them, and they give that recognition, or maybe, how do I that appreciation to compounding, not to their own habit. So you would be like कि मैं इतने साल से कंपाउंड कर रहा था, इसकी वजह से मैं ऐसा हूँ. नहीं, तू सोसाइटी जो अब रिफ्लेक्ट कर रही है, तू 5 साल पहले उसको समझ चुका था, इसकी वजह से तुझे वो कनेक्ट लग रहा है, तो ना ये बच्चों की चीज़ है यार. So because अब तेरे लिए, for other people it's hard, for you it's easy, and then you do it subconsciously again because it's an easy thing for you, automatically it makes you stand out in the crowd. In fact, bro, because
ahead of the time, the whole game is people who are popular are the ones who are average, who talk average. Bro, you so spot on. They're not the ones who are like super intelligent or ahead of the times. तो सारे जो रीडर्स होते हैं ना, वो एक लेवल आगे निकल जाते हैं. सो इसलिए उनके बिजनेसेस है, उनके सक्सेस भी ऐसी चीज़ में बनती है जो प्रिडिक्शन का गेम होता है. उस चीज़ में नहीं बनती जिसमें एक प्रेजेंट का गेम होता है. थिंक अबाउट इट. बहुत ज़बरदस्त बात है. मैंने ना एक बार तो दिस इज द अल्फा मेल कॉन्वर्सेशन, राइट? जब मैं ये पढ़ रहा था, आई वेंट टू माई साइक प्रोफेसर. ठीक है, ही वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट मैन एंड मेट एट कोलंबिया. ओल्डर गाय हैज कम अप विद हिज थ्योरीज. आई हैव डिस्कस्ड हिम इन माय बुक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. मैं उनके पास गया, मैंने बोला सर एक बात बताओ, क्यों ना बने सब लोग यार? है why not everybody be the leader? Why not everybody be the alpha male? Why not everybody lead their groups? And he said, listen, if you look at the data of people and who is the leader of that group, so say हम 7 लोग हैं, हम में से लीडर राज है. If you look at everybody's data, you see their preferences in things. You will find the leader is the most average preference amongst all that group. तो तेरे को फुटबॉल पसंद है, इसको बास्केटबॉल पसंद है, जिसको सब पसंद है एक एवरेज लेवल पे will eventually end up being the center axis of the group. And so not everybody wants to be average, and that is why not everybody wants to be that person. True. But उस टाइम पे ना प्लस रिलेटिबिलिटी भी तो होता है. ट्रस्ट कैसे करते हो तुम? ट्रस्ट उसी को करते हो जो रिलेटेबल लगता है, राइट? तो जो रिलेटेबल लग रहा है वो वही है जो तुम्हारे जैसी बातें करेगा, जो तो जिससे तुम कुछ तो कनेक्ट कर सकते हो. कनेक्ट उसी से कर सकते हो जो तुम्हारे सेम साइड माइंडसेट लेवल पे, और या तो तुम्हें बता रहा है कॉन्स्टेंटली कि तुम्हारे माइंडसेट लेवल पे. जो तुमसे एक लेवल आगे उससे तुम मान ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसके वो क्या, व्हाट्स द वर्ड, वोक, वो तुम्हारे लिए बहुत वोक है. इट्स अहेड ऑफ टाइम. He's ahead on the curve. He's ahead on the curve, or she's ahead on the curve. She's too woke for this. He's too woke for this. ऐसा नहीं होता. कुछ भी बोलते हैं. ये आजकल के बच्चे हैं, राइट? तो जो आजकल की जो यू नो जो कल की बातें करेंगे ना, वो आज रेलेवेंट होंगे. जो फ्यूचर की बात करेंगे ना, वो आज रेलेवेंट नहीं होंगे, फ्यूचर में ही रेलेवेंट होंगे. तो तब ना मेरे को याद है जब ये सब हो रहा था, आई had also gone down this rabbit hole of being like, देख यार ऐसा है. जो अभी साहिल ब्लूम ने एक पोस्ट किया था कुछ इसके सिलसिले में, which connects now. He said, look, as you grow older, you will spend most amount of time with your partner. That's where things are going, right? Your parents ke sath, your face time is going to go down. With your friends, your face time is going to go down. And I started figuring this out. I was like, look, I'm going to spend the most amount of time with one person I eventually choose and be like, iske sath mere ko rehna hai. I need to figure this out properly. And tab maine ek pura process document karke chhod ke rakh diya. I created a blueprint for myself. I was like, this is what I'll follow in conversation, in negotiation, in arguments, and I left it. And us time pe, there were friends who I circulated this with. All of them have great relationships at this point. You've met half of those relationships, right? I was even telling you about Kevin Durant wali story. So you know where that is. I know. For those who do not know, I was telling him about this friend whose girlfriend was asked out by Kevin Durant once, and she said no. So like, see, that blueprint works. Anyway, or now I find so many people suffer as I've gotten older, seeing friends get married, seeing friends who were married for 3 years having problems in their relationships. Big businesses, bro, 200-300 crore के businesses हैं, ठीक है, पर स्केल नहीं हो रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, और अपॉर्चुनिटीज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं बन रही, प्योरली बिकॉज घर में बसड़ है. आता ही नहीं बीवी से डील करना, आता ही नहीं पति से डील करना. I think that is such a solid component of figuring out in a way where if you get ahead of the curve on that, my God, your 30s and 40s are going to be so fruitful. Fair. How's your relationship with your girlfriend? Brilliant pivot. I'll tell you one thing, you know, कोई blueprint काम नहीं करेगा. That's like no matter what it's dynamic territory. It's like no matter what blueprint you choose to choose a right partner or like to build a relationship, it's like it's gonna go down to drain. Because I tell you what really happens. Okay, humans don't feel good when anything predictable happens. Okay. You are always just excited about the things which are super unpredictable. Okay. Always. For everything. Give me an example. Okay, I'll give you an example. Let's say sport. Okay, तूने बोला कि यार आप मेरे को ना क्रिकेट खेलना अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो क्रिकेट खेलने आता है, 10 दिन बहुत शौक से एकदम शौक से खेलने जाएगा. 11th डे वाला फक इट यार, छोड़ यार 12th डे छोड़ यार, ठीक है, देन यू स्टार्ट अवॉइडिंग बिकॉज अब वो न्यूनेस नहीं बची. एवरीथिंग इज प्रेडिक्टेबल. यू नो कि दोस्त फील कैसा होगा. सेम थिंग गोज विद लेट्स से any sport, any adventure sport. Every time when you know that the predictable ending or there's some level of thing which you can predict, you don't like the game anymore. That's why you feel this ki I want to do something more, I want to do something else. That's why the predictability kill karte hain log purpose se, right? But uske baad bhi they keep finding themselves, like they keep finding some or the other thing for themselves which helps them keep
in the motion, in the flow, जहाँ पे एक challenge होता है और नई नई चीज़ें पता होती है. तो you know the flow concept, right? तो वही होता है कि but there has to be some level of constant newness, नहीं तो नहीं मज़ा आता. So if you have built a blueprint and you know that you're gonna stick to that, and अगर वो same चीज़ होती है तो 3-4 बार तुझे अच्छा लगेगा, 6th time you'll be like done. Here is what I'll say about this. First, I think. I tell you, finish. Excitement चले जाएगी. You will be compromising. You will be adjusting. So my idea of perfect relationship is that if you are ready to constantly work on the relationship, then you should fall in the person. Like find yourself a person जिसके साथ तुझे काम करना बहुत मजा आता है. Right. Now, because then things get super exciting forever. So you're not fitting on blueprint. You're not fitting on values. You're not fitting on 10 other things. You just decide that, okay, XYZ reason, whatever the reason is, I've decided that I'm going to put everything to make it work with this person. And if that person also aligns in the same way, then you guys will have a brilliant relationship. Usually ऐसा होता है, एक करता है, एक नहीं करता है, और वहाँ फक हो जाता है. Right? बसड़ हो जाती है. That just goes wrong. Right. पर जब दोनों साथ में आते हैं तभी होता है, क्योंकि अगर वो blueprint दोनों follow कर रहे हैं, then तो बहुत boring हो जाएगी life. नहीं. It's not going to be fun. The difference is between static and predictable. I think people like prediction. जो वो नहीं होता bottle flip is a perfect example of that. No, I'm saying look, which is perfectly predictable. नहीं हो सकता. हो इन दो लोगों के बीच में कुछ perfectly predictable नहीं हो सकता. तो blueprint अगर तुमने बताई और ये perfectly कि मेरा ये पैरामीटर होना चाहिए, ये पैरामीटर होना चाहिए, ये पैरामीटर होना चाहिए, और हर बार अगर वो सामने वाली बंदी या बंदा उसी पैरामीटर पे लाई करता है, you won't like it. I'll tell you two things about that. One, on some level, you want adventure as a part of your 50% तेरा घर का उसमें. कुछ तो adventure चाहिए. वो तू ब्लूप्रिंटाइज कर भी नहीं सकता. तेरे को पता है तेरा जीवन कहाँ जा रहा है. एग्जैक्टली. तू ब्लूप्रिंटाइज क्या कर सकता है कि ब्रो देख, अगर हमारी लड़ाई होती है, ये हमारा इमरजेंसी प्रोटोकॉल है ताकि बात हाथ से बाहर ना निकले. ठीक है. और तू क्या कर सकता है कि हमारा जो कॉन्वर्सेशनल नेचर है, जो हमारा डिवीजन होगा, रफली इधर होगा, उसको तू क्लियर कर सकता है, फिक्स नहीं. यू कैन नॉट गेट स्टैटिक अबाउट इट. तो that was that's what you're making enough mistakes, right? But secondly, bro, I think also what people don't understand, and this is partly 90s Bollywood, post Karan Johar, Shah Rukh Khan Bollywood, is Indians love drama in their relationships. They look for वो unpredictability, that surfing the waves. ओहो क्या हो सकता है in their relationships. जैसे भाई मेरे को याद है, मैं जब छोटा था ना, मैं कहता था यार रिलेशनशिप तो है, लड़ाई नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा. जब मैं 16-17 साल का था, आई थिंक घर पे तो मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए भाई. मैं बाहर ले लूंगा सारी इंस्टेबिलिटी. अगर घर पे होगी ना तो मैं बाहर डबल भी ले लूंगा, क्योंकि मेरे को पता है अब मैं अपने डेन में आ गया हूँ, यहाँ आई एम टेकन केयर ऑफ. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो जो स्टेबिलिटी होती है ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट विल, आई फील in some way, like partially there should be some stability where you know that this is the person you can fall back. Like this is the person you can go back to. Right. But अगर हर चीज उस इंसान के साथ stable है ना, तो मर जाएगा. You won't like it. You won't like then it. Then it'll die. Like you won't like it at all. You won't enjoy coming home. On the bad days you'll enjoy coming home. On the good days you won't. Right. क्योंकि fun नहीं है. फिर तू affair करेगा. Exactly. Like you know then it gets bad. Right. So that's what I was saying, that it should not be 100% predictable or like stable or ऐसे नहीं होना चाहिए. There should be fun constantly. Right. And constant fun मतलब work. So I feel love, I would make it this way. Long lasting love is equals to constant work. Of because course. you're constantly working on yourself, your partner, your communication, your relationship, your growth, your goals, your career, your house, everything. You constantly, क्योंकि और यू नो हम लोग इतने फास्ट पेसिंग कंट्री, ऐसी फास्ट पेसिंग जनरेशन में हर दिन तू और मैं हर घंटे में अलग इंसान बनते आ रहे हैं. तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर टू पीपल टू बी सेम. आज जो मिले उन हमको बहुत मजा आ रहा है, कल दोनों अलग होंगे क्योंकि दोनों ने एक अलग कंटेंट पीस देख लिया होगा रात में और पूरी वैल्यू सिस्टम ही चेंज. तो उस टाइम बट देन दे हैव टू रीवर्क अगेन. सो देन इफ आर यू रेडी टू रीवर्क ऑन दैट? सो यू आस्किंग क्वेश्चन लाइक हाउ इज गोइंग विद माय गर्ल. I tell you, we love working on our relationship. I think it's been so many years, and we just feel, I think this is the best thing. I really believe that we've fallen in love with the process of just making things better with each other. It's just so much fun. So what is it like? Saturday nights we'll have phone calls and work on our relationships. Like how do you do that? No. It's just like when, for example, you know, I think अब तो बहुत अवेयर हो गए हम बहुत ज़्यादा. तो like we both know our weaknesses. We both know कि हम दोनों खुद ही कहाँ गड्ढा करते हैं, right? So for example, जैसे sometimes, so I have this habit of distancing myself when she needs me. For example, how would I say this? Let's say
when she just needs me to talk without an objective, I have a tendency to ignore. I have a tendency to distance myself because I'm always like objective. Ab kya? Kuch. So I can never. I'll tell you one crazy insight. Okay, लोग मेरे को गाली देंगे इसमें, but this is अगर तुम genuinely हो ना, like 90% of the people are gonna agree to this with me. At least if you are someone who is obsessively, like if you are obsessed with making your career work, okay, you cannot go to a restaurant with someone else without an objective. मेरे को तो खाना ही नहीं पसंद बाहर। हाँ, मतलब घर पे मंगा ले, मैं नहीं जा सकता। राइट, बाहर जाके देखते हैं, बात करेंगे, क्या बात करेंगे, मतलब क्या करूं मैं? हाँ, मतलब कुछ तो ऑब्जेक्ट, नेटवर्किंग हो रही है, कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई इंपॉर्टेंट ओकेशन है, कुछ बात करनी, कुछ तो होगा, कोई अच्छा डीजे आ रहा है, कोई आर्टिस्ट आ रहा है, डांस करने चल, कुछ तो होना चाहिए। क्यों बाहर जाएं, देखते हैं, चिल करेंगे। मतलब ये क्या है, मुझे नहीं करना। लाइक एंड यू नो, सो व्हेन थिंग्स लाइक दिस हैपन, व्हेन शी वांट्स मी टू लाइक आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट, just talk. Like, just talk क्या होता है? Right? So every time that happens, if I get a sense that कि ऐसा कुछ हो रहा है, I try to distance myself. And that's my weakness. And I want to change that. I think what she wants is for you to be a sounding board उस point पे. Yeah. Like listen. At this, and more than sounding board, it's just like sometimes, because I tell you, for her, it's super normal because she would go out with her girls and just do nothing. Yeah. Right? Bro. But I don't go out with my boys and do nothing. I only meet my boys when there's podcast to be made. You're my man, right? I like you. I like your company. We meet. There's like हम 1 घंटे के 4 घंटे बैठ जाते हैं. Right. That's fun. But I cannot meet you like चल भाई ऐसे घूमने चलते हैं. भाई नहीं चल सकते यार. So for her, what is normal to me, that is not normal. And I think that's what I'm working on right now. कि can I be with her at the time? Right. When for the things which is normal for her. So I tried. So now I've become self-aware for this. So now I try to कि अब मेरे को पता है कि कभी ऐसा होता है तो मैं एक बार अगर गलती कर देता हूँ, ऐसा कि यार कर दिया वापस, ऐसे if I'm trying to distance myself, next time I make sure that no, I have to be there. Just like maybe at that point she's not telling me. I don't know, एक point होता है. Women want to feel comfortable before they start sharing their problems. 100%. They feel warmed up. पहले warm up करवाओ. हाँ. Men don't need that. लॉन्डो को आते से दाके सीधे बोल देते हैं कि भाई हमारे फटके निकलते हैं। हाँ, ये दिक्कत है, हम पूरा भर जाएंगे, उसके बाहर ही निकालते हैं। हमारा कोई प्रोसेस नहीं होता। हाँ. इंक्रीमेंटल नहीं होता अपना। हाँ. तो आई वुड कॉल हर एंड बी लाइक ये प्रॉब्लम चल रही है एंड शी वुड इंस्टेंटली सॉल्व दैट. आई नीडेड इट डन. राइट. व्हेन शी कॉल्स मी, शी वांट्स मी टू जस्ट वेट देयर टिल द टाइम शी इज कंफर्टेबल. लाइक मे 5 minutes. And 5 minutes तो मैं क्या करूँ मैं 5 मिनट में? हो गया, खत्म हो गया, right? So I think that's the biggest problem, biggest weakness in me. Because यार, what I realized, she's always there for me. Right. And I'm not. वो बहुत गंदे, like मुझे बहुत बुरा लगा for the longest time. But now I'm changing that. Obviously, I'm becoming better. Right. So that's what I told you. In the beginning of understanding a men and women, the way you try to understand yourself, I try to understand the other gender. Because I've been surrounded by strong women around me. Me too. And I always want to just make sure that they are feeling best of themselves. Like, am I able to do something which adds up to their current state and makes them feel better? That's what I try to do. Whether it's my sisters, whether it's my mom, whether it's my girlfriend, whether it's my other friends. Or, this comes from place because while growing up, all of these people, they've helped me achieve my objectives. My mom always helped me with so many things by helping me choose career and never pressurizing me or forcing me to do anything. तू फेल भी होता रहा तो भी कुछ नहीं बोला भाई. मेरी मम्मी मेरे को सपोर्ट करती है, ठीक है. मेरी बहनें, उनको मैंने मेरी स्पीचेस दे के पका दिया था. लाइक देयर वाज अ पॉइंट, मुझे इंग्लिश नहीं आती ढंग से, और मेरी बहन रिसेंटली शी वेंट टू लाइक अ बेटर स्कूल. शी लेफ्ट एंड उधर हर इंग्लिश वो स्पॉट ऑन, एकदम सही थी. मैं उसके जाके गलत सलत स्पीचेस दे रहा हूँ, उसको पकाया जा रहा हूँ, और वो बेचारी मेरी करेक्ट करते जा रही है. रात को 11 बज रही है, उसको सुबह 6 बजे स्कूल उठ के जाना है, लेकिन वो 11 से 1 बजे तक मेरी स्पीचेस सुन रही है. एक ही स्पीच 10 बार सुन रही है, राइट. सो शी हेल्प मी. माई गर्लफ्रेंड, मैं कॉन्टेंट ब्लॉक हो गया, वो मेरे लिए कॉन्टेंट लिख के दे रही है. बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स मी बेटर देन एनीवन एल्स राइट नाउ, बिकॉज माई फेस टाइम विथ हर इज सो मच मोर, राइट. सो मेरा कॉन्टेंट वो लिख के दे रही. सो इन सब ने मुझे इतनी जगह हेल्प करी है कि नाउ दैट आई लुक बैक इन हाइंडसाइट, आई फील आई एम सो सेल्फिश. So now I want ki okay, what do they want? They want strong men, bro. That's what you become. They want strong men. That's what I'm becoming. Right. But at the same time, they also want time. Yeah. Yesterday I saw a clip.
लव की स्पेलिंग LOVE नहीं होती, TIME होती है. ये भाई ये राजशमानी क्लिप ही थी भाई, ये जिसको नहीं पता ये राजशमानी रील क्लिप ही थी. ब्रो किसी और की क्लिप थी, मैंने देखा, पता है किसकी देखी थी यार, आई थिंक शांतनु के पॉडकास्ट पे किसी और ने आके बोला. शांतनु बाबा शॉप वाला, वेरी नीश एंटरप्रेन्योर पॉडकास्ट. हाय शांतनु. किसी ने उसके पॉडकास्ट में किसी और बंदे ने बोली थी, आई डोंट इवन रिमेंबर हिज नेम. ब्रो कितना स्पॉट ऑन था. तो एंड यू नो आई टेल यू, ये भी इट्स बायस्ड. जो लोग टाइम नहीं देते ना उनके लिए स्पेलिंग TIME है. जो बहुत टाइम देते हैं ना उनके लिए WORK है. ब्रो आई अंडरस्टैंड कि वो स्केलर है, मतलब ऐसा इधर एंड अप करना है स्केल पे, वो अलग है. Yes. बट आई गॉट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज माई डैड वॉज द वर्क काइंड, है ना. माई डैड वॉज गोइंग हार्ड ब्रो. आई डिडंट इवन सी हिम फॉर years when he was working, right? And so whatever things my mom had very early on, I began to take the soundboarding of that. Like she would come to me rant. Very quickly I realized she doesn't want this solved. She can solve this. उनको चाहिए अभी प्रखर सुने. तो हाँ और बताओ. Same with my mom. in America bro. मम्मी 1 घंटे से मेरे को बोल रही है, ठीक है. एंड सो मैं और क्लाउ सपोज हम लोग वो देख रहे होंगे टीवी. क्लाउ पॉज कर दे, अब 1 घंटा मेरे को सुनना है, ठीक है. हाँ राइट. एंड यू हियर द होल थिंग आउट, यू आस्क देम राइट क्वेश्चंस, नज करना है. अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय दिस, एंड सडनली एक और बर्स्ट ओपन हो गया, राइट. तो that's a very different thing. But yesterday I had a very unique privilege. I enjoy this once in a while. And this privilege comes from a place where a friend of mine once told me, be a shapeshifter. To like get into rooms properly. You probably understand this better than most people in the world. You have to change shapes. You have to be different people to get into different rooms. Right? Yeah. Oh, 100%. Right? Oh, 100%. Yesterday I was hanging out with my girlfriend who's visiting India for the first time and a friend of mine. Dono females and they are friends too. क्या बात हो रही है, क्या बात कर रहे हो तुम दोनों भाई. मैं कह रहा हूँ ये भी कॉन्वर्सेशन होती है कि माइली साइरस इसने क्या पहना होगा. एंड आई एम जस्ट सिटिंग देयर लाइक, ये तो देयर इज जीरो ऑब्जेक्टिव इन दिस कॉन्वर्सेशन. दिस इज अ कॉन्वर्सेशन अबाउट हाउ एक्सप्रेशन ऑपरेट्स विद अ थर्ड पर्सन. एंड it is so interesting. I want to learn so much about that because as we grow up bro, men we forget how to talk nonsense shit after a certain while. It's all about ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको कैसे चलाना है, ये काम कैसे होगा, right? So there is merit to that part of life too. Yep. Right. That's for sure. And I tell you, okay, it's not that men don't do that. लौंडे ज़्यादा करते हैं. लौंडे एक दूसरे की लेते हैं, ठीक है, करते हैं. पर I tell you कि सबसे गेम क्या है, बिकॉज बचपन से हमें ये सिखाया कि पावर में मेरिट है. हमारी कॉन्वर्जेशन भी पावर के अराउंड ही रिलेट करती है. तो हम बात करेंगे, रैंडम बैठ के बात करेंगे पॉलिटिक्स की, क्योंकि वो पावरफुल चीज़ है. कोई रैंडम बैठ, हम एक्सप्रेशन की याद नहीं, हमारा सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है. ले भी रहे तो सिर्फ रूम में बताने के बेटे मैं तेरा बड़ा हूँ, राइट. पूरा बस गेम ही पावर डायनामिक का चल रहा है, सेल्फ एक्सप्रेशन का तो है ही नहीं. सो हम भी नॉनसेंस बातें करते हैं, हम सब करते हैं, बट हमारी नॉनसेंस बातों में भी एक सबकॉन्शियसली एक ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज पावर डायनामिक. तो हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे क्योंकि उसमें एक इमोशन इन्वॉल्व है, दैट्स विनिंग. द वन हु इज वन इज पावरफुल, राइट. सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट दैट. स्पोर्ट्स की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, किसी की फालतू ले लेंगे, हम सिर्फ ऐसी बात करते हैं. मतलब और बचपन में देखा है, मतलब हैव यू हर्ड मैक्सिमम लोग, हर 11th-12th का बच्चा किसी न किसी का बाप चाचा दोस्त होता है, बेटा विधायक हैं, वो चाचा, ये क्योंकि पावर फालतू बातें हो रही है. कोई बचाने नहीं आ रहा उसको. वो पिटेगा तू, तेरा होता रहा चाचा विधायक, तू पिटेगा, अभी बता रहा हूँ गारंटी. तू यहीं पिटेगा, तू छोड़ दे. और तू रोते हुए निकलेगा, ये बोलते हुए मैं आऊंगा चाचा को लेके, और नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा. एग्जैक्टली. Women don't talk like this shit. They always talk about improving themselves, seeing other people improve themselves, having better expression of emotion, what's going on in someone else's life, how is that person getting treated and how you are getting treated, how you don't want to be treated, how you want to get treated. They're always just about self-care. हम लोग का गेम ही पूरा उल्टा होता है, तभी बकैती दोनों करते हैं, बस जो तरीके हैं वो अलग है. ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं करते. इस वक्त सारे 4 लौंडों बिठा दो एक रूम में, कोई काम की बात नहीं कर रहे हैं, सब बकचोदी कर रहे हैं, और बकचोदी के लिए एक बहाना चाहिए. हाँ, बट सब कॉन्शियसली ट्राई कर रहे हैं किसी तरह से वो सुपीरियरिटी दिखा दे अपनी रूम में. So if you look at like the way men form groups versus women form groups, बहुत ही डिफरेंट गेम है. गेम ड्रिवन होते हैं men के ग्रुप्स, गेम ड्रिवन होते हैं, पावर ड्रिवन होते हैं, डायनामिक्स. मतलब यार देख, मैं ना, मतलब ये नहीं, आई एम नॉट थिंकिंग फ्रॉम एन इंटेंशन व्हिच इज बैड कि तुम्हें अपने दोस्त से बेटर फील करना है, ये नहीं. तुम्हें सबकॉन्शियसली खुद को बेटर फील करना है, उसको नीचा नहीं दिखाना, राइट. तुम तो साथ में ही हो, तुम सोचती हो, बट सबकॉन्शियसली तुम्हें लगे मैं ले ली तो मैं खुश हो गया आज. I see what you mean. I would, the way I spell that is कि जब when I'm hanging out with my friends, we better be playing a game.
हम लोग compete करते रहे, वो कहीं जाता है, मैं हार जाऊं, तू मेरे को 4 गाली दे दे, कुछ ना दोस्ती कुछ तो करना बढ़ है ना, जाएगी। बैठे नहीं रह सकते, Right, कुछ ना कुछ करना है। अब मैं क्या करूं, चाय पीऊं तेरे साथ मिलके, हैं मैं क्या करूं साले, हैं? I know what you Exactly. mean. But that's what I meant by men and women are not same. And that's where men need to spend more time with women to understand. क्योंकि है ना, I tell you honestly, अब जब मैं जाता हूँ ना बाहर, like sometime when I go out on dates and when I go with her friends, I enjoy talking random shit with them. You learn that. I learn के बाद भी I just enjoy. I never knew that that's a side of me. Sometimes it's good to not have any objective and just be you. And just talk shit. Just talk. और तुम्हें कुछ यार वो आधे घंटे के लिए मजा आता है. Like साहिल ब्लूम ने एक बात बोली थी. Can you do nothing and still be with that person? Okay. And that was spot on. So now I like doing nothing with her. So I never knew this is a side of me. तो अच्छा है मेरे को exhaustion से ना वो बचाता है. नहीं तो मैं दिन भर I'm so goal driven, I'm so vision driven, manifestation. अभी हम बात करते हैं मेरे वाईफाई पासवर्ड से कि मेरे डायलर टोन से लेकर मेरे रूम में वॉल हर चीज इट्स एवरीवेयर इज विजुअल दैट I'm hardcore goal driven person. I used to write things, the things which I'm achieving right now, I used to write them when I was in 11th, 12th class, sitting in a back bench when I didn't even know how to communicate properly. तो मैं दिन भर बस वही सोच रहा था. So इसका कोई तो कभी तो टाइम है तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे, तो उस एग्जॉस्टन वो एग्जॉस्टेड स्टेट से बचाती है मेरी गर्लफ्रेंड. No, you're spot on. You're burning out as a man, right? I burn out. तो burn out नहीं हूँ, उसके लिए लाइफ इंजॉय भी कर सकती है, वो मुझे सिखाती है. नाउ आई नो सो मेनी थिंग्स अबाउट मी कि मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है. शी टोल्ड मी, आई डिडंट नो, नेवर न्यू दैट आई एंजॉय cuisines of different countries. What do you enjoy? Like Italian I really like, Mexican I really like. Now Asian मेरे को I've become fan of Asian. मैं खुद से अकेले घर में बैठे मैं डिमसम ऑर्डर कर रहा हूँ. That's like wild. मैं कभी नहीं सोचा मैं डिमसम ऑर्डर करूँगा. आदमी सोचता ही नहीं, आदमी कहता है यार लगा दे रोटी यार, खा लेंगे. हाँ, मम्मी बोलती है खाने में क्या खाना है, क्या खाना है, बना दो जो बना है खा लेंगे. अपने हमें बस पता है क्या नहीं खाना है. हाँ, right. बाकी कुछ भी दे दो. Precisely. हमें पता है क्या नहीं खाना है. बाकी कुछ भी दे दो. भाई कुछ ही मैं लाइक रोज माय शेफ आस्क मी एवरी डे कि भाई क्या बनाऊं, कुछ भी बना दे यार, तू देख ले, भिंडी कर दे, बट नाउ बिकम दैट एंड आई एंजॉय दैट. मेरे को उस दिन फुलफिल्ड फील होता है, मजा आता है. सो शी टॉट मी दैट बिकॉज शी फोर्स मी टू गेट आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन एंड यू नो मेक मी enjoy certain things. Now I love it. Now I think I've become a more foodie than a better foodie or a bigger foodie than her. I know what you mean exactly, bro. मेरे को ना इंडियन डेजर्ट्स, क्योंकि मैं मेरे ना घर पे डायबिटीज वगैरह रहता था तो मैं कभी खाता नहीं था मिठाई. आई वॉज वेरी कॉन्शियस ऑफ दैट फ्रॉम द बिगिनिंग. बट बिकॉज ऑफ माई मैक्सिकन गर्लफ्रेंड आई एम डिस्कवरिंग इंडियन डेजर्ट्स लाइक नेवर बिफोर. जब से वो आई है रोज रात को 3 अलग जगह से रसमलाई, फालूदा, रबड़ी आती है. अलग अलग जगह से हम ट्राई करते हैं और मेरे को उसको फ्लेवर डिस्क्राइब करना पड़ता है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है. एंड आई एम लाइक ये भी मिला हुआ है इसमें, पिस्ता भी हो. मेरे को सीखना पड़ रहा है भाई इसका इंग्लिश क्या होता है, किसका इंग्लिश सोच रहे थे हम, गुलकन वुलकन का इंग्लिश क्या होता है, ये सब सीखना पड़ रहा है. क्या होता है इंग्लिश पता नहीं भाई, याद भी नहीं है तो भाई वो नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. बट लाइक नहीं, कल हम क्या खा रहे थे, वी वर ईटिंग समथिंग एंड आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट. पान, कल उसको पान खिलाया तो पान समझा रहा था मैं, बीटल नट लीफ के ऊपर यू नो स्पाइसेस. So interesting. So there is a certain way in which because I was raised around, most of my family is sisters, bro. There's only so many brothers and all of them are like about their job. I haven't seen my brother in weeks since I've been here and years when I'm not here. I don't see my father, my uncle the same. But I will see my sisters, I will see all my sisters and they'll be more often around me and I grew up with them. And that was a very interesting way to grow up because I think a lot of my feminine side was developed because of that. Like I was just more in sync with how people feel. Bro, so spot. I tell you, most of my cousins are like, I have sisters more than brothers. Okay, I tell you. So मेरे घर पे ना mostly हर 10-12 दिन में all my buas they come home. So my buas will sit, talk, their kids, like all of us, like our kids, we will sit, talk, random बैठे रहेंगे. Our parents, like our dads, okay, will be playing chess. मैंने उनको बचपन से सिर्फ चेस खेलते हुए देखा है. तो इट्स जस्ट जब तू बोल रहा है ना कि बिकॉज आई स्पेंड मोर, आई नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड टाइम विद देम टू अंडरस्टैंड द साइकी, क्योंकि वो हमेशा कुछ खेल ही रहते हैं. हमेशा गेम ही खेल रहे हैं, हमेशा गेम खेल रहे हैं. रात को सिर्फ डिनर करने के लिए वो लोग उठ के अलग से आते हैं, उठते हैं, डिनर करते हैं, सब लोग साथ में बैठ के उस टाइम हंसी मजाक होता है, मस्ती करते हैं. देन men back to playing chess, women back to doing what they do. Women going back to enjoying with all of us. We all are laughing, giggling, having fun.
और वो वहाँ पे मेरे बड़े पापा और मेरे अंकल मतलब जो जीजू हैं वो बैठ के चेस में सीन से बैठ और हम लोग इधर जोर जोर से हंस रहे हैं, पास पड़ोसी सुन रहे हैं, राइट? तो आई लर्न टू एक्सप्रेस एंड एन्जॉय बिकॉज दिस वाज द वे आई ब्रॉट अप एंड इट्स सच अ, तूने जैसे बोला ना कि तू उधर एक्सपीरियंस करा था, बिकॉज मैंने भी एक्सपीरियंस किया भाई, ये Right. हमेशा होता है, आई थिंक आज भी होता है ये. ब्रो मेरा तो सो माई कम्युनिटी इज कॉल्ड शेर गैंग और बहन परिवार, एंड बहन परिवार कम्स फ्रॉम दैट बिकॉज आई हैड अ बहन परिवार, सारी कजन बहनें हैं, इनकी शादी है, इनकी शादी है, इनका ध्यान रखना है, इनका ध्यान रखना है. अच्छा प्लस में मिडिल चाइल्ड इन अ सर्टन वे, राइट? तो वहाँ से आई रिमेंबर माई डैड टोल्ड मी द स्टोरी ब्रो वेरी अर्ली ऑन. नो ही डिडंट टेल मी अ स्टोरी, ही गेव मी अ वैल्यू. ठीक है, भाई बड़ा है वो राम है, तुम भरत हो, बहन छोटी है, तुम्हें उसको बचा के रखना है. सबसे पहले वो आते हैं, तुम लास्ट में आते हो, राइट? तो मैं ना बड़ा रेजिस्ट करता था इस चीज़ को कि क्यों यार, मिडिल चाइल्ड कॉम्प्लेक्स इज रियल. फिर आई रिमेंबर वॉचिंग दिस मूवी कॉल्ड बाजा विच वॉज जस्ट शोड टू अस एट स्कूल फॉर सम रीजन, एंड द मूवी वॉज अबाउट सैक्रिफाइस ब्रो. एक बच्चे को एक बाजा मिल जाता है, वो माउथ ऑर्गन, और उसकी बहन को पसंद आ जाता है, एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ हिम रेजिस्टिंग इट अंटिल ही गिव्स इट टू हर. और ब्रो मैं 7 साल का रोया दबा के हॉल में. तब तक तो तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम अपने क्लासमेट्स के सामने रो रहे हो. हाउ डू यू फील अबाउट इट? आई वॉज जस्ट क्राइंग, बॉलिंग, एंड आई थिंक दैट in the midst of my very feminine upbringing created the man in me. Like, and this is my question to you, because you are a very, I go around your house, okay? I didn't stop at you showing me this is room and this is what, I stopped at everything you'd written at different places. Why does it say this? Why is this information organized this way? Because that is a very achievement, objective oriented organization of the only person, by the way, I'll say this on camera, I think manifestation's full of shit for the most part, but you are the only person who makes me feel like अच्छे से बात कर सकते हैं लोग, people manifest bro, no problem, like that happens because your entire space is organized in a way where your objectives are visual and in front of you. You are a very go-getter kind of a human. Every time we've met, from the day when you were starting your content and you were at 5,000 subscribers on Instagram till now where you're doing all these great things we cannot even talk about on camera, you're a very go-getter kind of person. Where did that come from? And two, sorry, it's a formal question, and two, how do you pass this on to people who listen to you? What is it that you pass on to these people? So tell me about that, historically, where that's coming from and kya bole? Yeah, that comes from the second side. That comes from my dad. I grew up seeing him struggle. Okay, so I tell you, my dad, my grandfather, they come from nothing. In fact, there was a time when my dad was a coconut vendor, right? So I didn't see that, fortunately. I was born at a good house, good place, everything was there. But I've always seen him just talking about these things only. It's always कि कुछ लेके आना है, कुछ करना है, you know, और आगे जाना है, मुझे मेरे stability चाहिए. So because my dad always focused on just stability, I was like, मुझे इससे और कुछ crazy करना है. So I always had this in my mind कि stable तो कर दिया. वो पापा ने कर दिया, हाँ. अब क्या, right? So and in my family, okay, my dad is one of the most respected people because of the things he has done. I mean, he comes from nothing and now he's built like a multi-million-dollar business, right? So, and when you're not educated, when you don't know how to communicate well, you don't know, मतलब English तो तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें international कुछ नहीं पता, like you don't know the basic. If you want to English की अगर आप बात करें, if you want to rate his skills from 1 to 10, I would rate him 2 or 1. Like he would barely read and understand stuff. And from there on to now doing business with people who are like massive, right? So उन्होंने बहुत किया. So he's always, so everyone else in my family gets overshadowed by his achievements. Okay, I know exactly what you mean. Right? So everybody else, no matter what they do in their own domains, they all get, okay. Plus, apart from that, then my dad is a big giver. He runs one of the largest NGOs in India, in fact, right? So always, मतलब सारा donate करते हैं, society, community, keep giving. He would always be there to organize blood camps and organ transplants and then eye donation and then notebooks to underprivileged kids. मतलब वो हमेशा, it's always about giving. So it's like a great giver. Socially, he has great values. Then तो हर चीज़ है ना उनसे overshadow हो जाती. And I never got attention for anything at all. Okay. So in my school, because I was not good at sports, I was not good at any major thing. जो भी manly बनाती तुम्हें, तूने mention किया है ये, कभी भी नहीं करते तुम. अब मैं घर पे भी overshadow हो रहा हूँ, मैं स्कूल में भी overshadow हो रहा हूँ,
So my go-getter attitude comes from that कि मेरे को overshadow नहीं होना life में किसी से. So it was subconsciously it became my competition with my dad. Oedipus. This is Freudian as fuck, guys. Ladies and gentlemen, it's real, huh? So I was like, I want to be... Okay, and he always wanted me to be bigger than him. Like, he never saw me as Fathers will confident, always right? do that. Fathers will always do that. He never tried to... In fact, he was supporting. He was always there. He's like, every moment, his communication also was always like, everything which I have is yours and you're going to be better than me. I know it. His conviction. In my head, I just want to beat him for some reason, for the longest time. So, I wanted to beat my... Okay, then मैं थोड़ा बाहर निकला. मेरे सारे दोस्त बहुत रईस बन गए, अमीर बन गए लोग. मेरे को उनको बीट करना है, उनकी लाइफस्टाइल्स बीट करनी है. So my attitude became, because everyone around me was such achiever on some level, maybe them or their families, that I was always overshadowed. And I didn't want to be that kid. So for the longest time, they था मेरे को beat करना है, you know. I tell you exactly what you mean. I tell you one crazy thing. I've never said this. Okay. I left my family business, okay, where I was killing it, where my father was making sure to give me all credits. मतलब वो मुझे हर चीज़ का क्रेडिट दे रहे थे. इनफैक्ट जो चीज़ मैं नहीं करता था उसका भी वो 4 बातें बढ़ा के ऊपर बढ़ाते थे सब लोगों में कि यार इसने किया. आई वॉज डूइंग गुड और मैं बढ़िया कर रहा था, मैं अच्छा भी कर रहा था, मैं अच्छा काम कर रहा था, सब बढ़ा भी रहा था. मेरे को क्रेडिट मिलने भी चाहिए थे थोड़े बहुत, बट उन्होंने उस क्रेडिट को ना 10 गुना करके और बढ़ा दिया. लाइक ही ऑलवेज मेड दैट. सो ही ऑलवेज शोड दैट you are better than me, you're bigger than me, you're dead. Still, I left that and I was like, I want to do something of my own, because ek insight, okay, one day, one insight. There was one thing where we both disagreed on something. Okay, there was something about my relationship, something about my personal life, something about my future plans, jo bhi. We disagreed on that. And he showed some kind of power over me. Because obviously he's dad. That's what he do. And it was not financial in nature. And मैंने उसको दिल पे ले लिया. I was like, let it be. I now want to have my own story. I want to be alone. I want to do my own thing. I was so wrong at that time. I was so wrong. But I don't regret it at all. I'm so happy that I did it, because I found myself. I wouldn't have... You'd be playing the same game, bro. If I wouldn't have respected myself or my dad the way I do today. Okay. So I left it. So cool. I came to Bombay. I started my journey from scratch. I knew at every point that I can take money from him and have a comfortable life, and in fact be 10x bigger than who I am today. Because obviously money fuels your growth. I would have beaten, like, I tell you honestly, the backing which I had access to, I would have beaten every content creator in our domain you know of, just by paid, forget organic. Like just by running ads, right? And still, that wouldn't be a dent on my pocket. Okay. I know what you mean. Right? But I didn't take even a penny, and I was sleeping on the floor because I was waiting for my next collaboration to happen, which will allow me to buy a bed. Right? I didn't do that because मेरा self ego और वो self उस time पे जो race थी ना मेरे अंदर, that didn't allow me. तो आग लगी हुई थी. That didn't allow me. I did it. मैंने पूरी मेरी journey zero से start करी. I didn't take anyone's help. I didn't take any money from anyone. I started doing everything. And of course, in 2 years, touch wood, we did really good. I think we reinvented ourselves. And now I make good money. No, I agree. I make good stuff. Decent money. Looking around, I can say there is decent money here. So that was like, I think my attitude was always like, I don't want to be overshadowed. Yeah. And जब मुझे वो लगा ना, तो मैं छोड़ के मैं अकेला मेरी खुद की कहानी बनाने आ गया. And because हमेशा, I tell you the manifestation, the go-getter and all that stuff, right? ना बचपन में मेरे को ये था कि मेरे को overshadow नहीं होना, तो मुझे उसके लिए क्या करना है, ये करना और मैं करके रहूँगा. So I would just say it out loud to myself and pen it down. I'm like a big writer, like I used to always write in a book. मेरी writing बहुत बेकार है, but मैं note कुछ भी बना दूंगा, right? I will say, and वो जब true हो जाती है ना, पहली चीज़ true हो गई, लत लग जाती है. फिर तो मेरे को था कि अब लिखूंगा, अगली चीज़ भी ट्रू करूंगा, फिर अगली चीज़ भी ट्रू करूंगा. सो दैट्स व्हाई बिकम हार्डकोर मैनिफेस्ट. लाइक पहले मैं एक चीज़ लिखता था और वो अचीव करता था. अब मैं 100 चीज़ें लिखता हूँ, उसमें से 2 अचीव हो जाती है, लोगों को लगता है वाह मैनिफेस्टेशन, बट दैट्स ऑल्सो ट्रू. बट नाउ दैट इज बिकम द थिंग. एंड सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इट वाज दैट. बट नाउ सिंस लास्ट 1 year, okay, the game has changed.
बिकॉज आई थिंक वो बोलते हैं ना कि तुम्हारा खुद का घड़ा भर लो उसके बाद लोगों को देना टाइप्स, बिल्कुल खुद बिल्कुल का मास्क पहन लो. हाँ आई फील कि इन माई जर्नी ऑफ वट एवर रीज़न, कुछ भी, मैंने जो सपने देखे वो पूरे करे, और सिर्फ वो पूरे करे लत लगा के कि मेरे को पूरे करने हैं, फिगरिंग आउट टाइप. कि कुछ तो फिगर आउट कर ही लेंगे भाई, हम तुक्के मारेंगे जब तक चलती नहीं. हाँ सीख लेंगे, लोगों से सीख लेंगे, दोस्ती बना लेंगे, नेटवर्क बना लेंगे, टेढ़ा काम कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, करेंगे, भाई हुक को क्रुक बना लेंगे, करेंगे. राइट. हाँ सपने देख लिए तो अचीव हो जाएंगे, राइट. वो कर लिए. तो अब मेरा ऐसा गेम हो गया, जो भी एनीवन एल्स हु लुक्स एट मी एंड बी लाइक यार पूरे नहीं होते सपने, कुछ ही लकी लोगों के लिए होते हैं कुछ, तो मेरा पर्पस ऐसा हो गया कि नहीं भाई अब तो मेरे को अपने आसपास वालों के अब सबके सपने पूरे करने. तो माई ऑडियंस नाउ बिकम सो दिस कि ऑडियंस ने सब कुछ दिया, तो अब जिसने दिया ना उन सबके सपने ही पूरे होने चाहिए, क्योंकि मेरे को तो पता है कैसे होते हैं. तो मैं दिखा के कराना चाहता हूँ जब तक मेरे को फॉर्मूला नहीं मिल जाता. सो राइट नाउ दैट्स व्हाई आई एम गोइंग इवन बिगर. लाइक हम पहले से इतना बोलता था कि यार महीने के 1 लाख कमा लो खुद इंडिपेंडेंटली, तुम बहुत हो, ठीक है. फिर मैं बोलने लगा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ. फिर मैं बोल रहा भाई दुनिया के सारे सपने पूरे करो, फेम भी होनी चाहिए, गेम भी होना चाहिए, पावर भी होना चाहिए. फिर वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा. मैं अब तो भाई रैंडम बैठे हैं, कुछ टैक्स नहीं, $1 बिलियन कंपनी बनाएंगे. और मैं वो प्रोसेस दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि उसका तरीका, मतलब मैं क्या फ्रेमवर्क दूँ ऑडियंस को जिससे हो जाए. फिगरिंग आउट. मेरे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है. जिस दिन फ्रेमवर्क हुई उस दिन वो भी ऑडियंस को देने लग जाऊंगा. तो अब मेरा ये कि मैं ऑडियंस की वजह से सिर्फ दिखाने के लिए ब्रो तुम्हारे सामने मैं ये बोल रहा हूँ और करके दिखा रहा हूँ. नहीं भी हुआ तो ठीक है, ट्राई करा ना हमने, तुम सबको दिखाने के लिए. लाइक दैट. सो दैट इज बिकम माई गेम, दैट एवरीवन हु इज वाचिंग मी should feel power of dreams the same way I do. That's lovely, bro. I think and I've felt this at least the couple of times we've hung out. हम पहली बार तब मिले थे, तू न्यूयॉर्क आया था, उससे पहले मिल चुके थे हम. पहले मिले हैं हम लोग. उससे पहले कब मिले हम? न्यूयॉर्क से पहले कब मिले? हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, हम शायद उस टाइम पहली बार मिले थे और हमने काफ़ी देर बैठ के बात करी थी. न्यूयॉर्क से पहले हम ऑनलाइन मिले थे. हाँ कोविड में हमने साथ में. बट आई थिंक you're way older for your years. तू मेरे से भी 1-2 साल छोटा है. 25? I'm 26. हाँ. So we are the same. It's the same age. And if I get that compliment, you definitely earn that compliment that you're way more mature and older than what your age might suggest to a rando, right? Like this is absolutely brilliant to be able to come to that progression. For me, it was somewhat instinctive, at least in words, because I read so much, I spoke so much, I was interacting with royalty. Intellectual royalty, right? And that's where I earned all of this. Then I had whatever anecdotes I had from my own adventures, but brilliant, first of all. Secondly, the thing about being overshadowed is very real, and I appreciate you saying that, because I always passed it off as a joke until a woman pointed this out. So I had a short or long chess career purely for a single reason. I was 3. My mother got me and my dad a chessboard. I played my dad and I lost. And I was like, fuck this shit. You don't get to beat me and walk away. And that started a proper blitz for another 11 years in which I won national events. I was internationally rated. All of that came from that one moment where my dad beat me. The second push in my go-getter life came from the fact where I understood how easy it is for power to dominate you. Which came in the form, a friendly form, but a form regardless of my father. जो तेरे साथ एक बार हुआ ना, मेरे साथ रोज होता था. 10th के एग्जाम्स के बाद all my friends were going to watch the movie Robo. याद है? चिट्टी Robo. I go to my dad, I'm like, पापा आज बोर्ड खत्म हो गया, मूवी देखने जा रहा हूँ. पापा कहते हैं अच्छे बच्चे मूवीज नहीं देखते. अंदर जाओ. 10th के बोर्ड खत्म हुए हैं, क्या बोलूँ, और बोलने का कोई स्कोप नहीं. पापा लॉयर हैं और उनकी आवाज जब गरजती है ना, मेरे जैसे बैठ जाते हैं 5 मिनट के लिए. भाई बर्बाद हो गया मैं अंदर से. और ये तो एक है, मैं ऐसे बता नहीं सकता तेरे को कितने इंसिडेंट्स हैं जहां पे आर्बिट्रेरली डिसमिस्ड, गेट आउट ऑफ माय वे, आई एम वर्किंग. एंड सो आई वाज लाइक, ये तो नहीं चलेगा. लाइक दिस इज नॉट गोइंग टू बी माय सिचुएशन फॉरएवर. देन व्हाट हैपेंस इज यू गो ऑन योर एडवेंचर, यू गो अबाउट इन द वर्ल्ड एंड यू रियलाइज कि वो तो फिर भी फ्रेंडली था. यहां तो साले कुत्ते बैठे नोचने को भाई. फिर तुम बोलते हो अब मैं स्ट्रेंथ ड्रॉ करता हूं अपनी पापा की स्ट्रेंथ से, उस तरीके की पावर जनरेशन एबिलिटी से, उस मैन्युफैक्चरिंग से. एंड वहां से ना आई स्टार्टेड थिंकिंग वेरी डेडिकेटेडली अबाउट व्हाट आई वांट टू टेल माय ऑडियंस, राइट? लाइक फॉर यू इट माइट बी हाउ यू बिल्ड दिस अप, एंड I only know so much about building, right? I know a lot about how to keep yourself together in here. And what I think is this is a 4-part formula, bro. You have to be fearless as hell. Because when you see opportunity or when you see need, you have to be there. The second, and this I know you will agree, you have to be articulate as fuck. Oh, for sure. Because bro, the pen is mightier than the sword. Yeah.
Pull out your tongue, pull out your pen and make this shit work. Manifest it with words properly in the room. The third is you have to be competent beyond anybody else in the room. You have to be the hardest worker. This is Dwayne The Rock Johnson, right? My dad, because उनको तो इंग्लिश क्या भाई, वो तो टाट पट्टी के स्कूल में पढ़े हैं, बहुत ही सेम सिचुएशन, बहुत गरीब थे. मम्मा बताती हैं जब पापा ने एज अ लॉयर स्टार्ट किया ना अपना काम, रात भर पहले अपना केस लिख लेते थे पूरा दिन इंग्लिश में, फिर उसको शीशे के सामने पढ़ के रखते थे, सुबह जाके आर्ग्यू करना है. From that, he's gotten to the man that he's become now. And that is competence. That is brute hard work pushing against the impossible. And the last is educated. The most educated person that you can be. And educated is not formally whatever degrees. Bro, wherever the hell. If you're curious about something and you're not chasing it down, if you know you can do something about something and you're not doing it, you are inviting stress, you're inviting self-doubt, you're inviting all the things that will poison your soul in the long run. And if you can tackle these 4 problems honestly, every effort that you make, if they are attested by these 4 pillars, you are going the right direction. True. And this is a compass I sort of came up with in this process. I've never discussed this, I think, in content because I've been building it properly. But if you get these 4 values down, you're done. Nobody can stop you. And I think you're a good representation of that. Because हमारी जो off-camera conversations हैं, I know just how fearless you are. Yeah. I've not forgotten that conversation, bro. It's commendable. It's commendable. Do you have a younger sibling? Yeah. Brother. What do you tell your brother, bro, about life? Like वो तेरे को देख के ऐसे नहीं उसको लगता कि भाई यार भैया तो फाड़ है. लगता है उसे? तू उसको कैसे लाता है? How do you bring him into your world? लगता तो होगा. That's what I mean. मेरे सामने तो बोलता है. मेरे भैया बेस्ट है. भाई मैं तो हमेशा बोलता हूँ मेरे भैया बेस्ट है भाई. You know, I like my brother. I tell you one great thing about him. He's hungrier than me. Fuck no bro, शमानी क्या करने वाले हैं? ये सिंधियों की प्रॉब्लम ही है भाई, ये शमानी सब ले जाएंगे. सिंधी है ना तू? हाँ भाई. मैं नहीं भाई सिंधियों के साथ खेलना, कैंसल. सुनना, मैं फोर्ब्स के कवर पे आया. It was one of the biggest. I tell you. अच्छा हाँ. ठीक है, लोगों के लिए इतनी बड़ी. ये लड़का है छोटा शमानी. Crazy bro, very congratulations. Thank you. You deserve it. Thank you. ठीक है. Who are the other 3 people? अच्छा नाम लिखे. Nice. एक और है. There is one more Sindhi here by the way guys. If you need to know this, there are 2 Sindhis on Forbes 30 under 30. हाँ. तो I tell you, so मैं तो Forbes का cover, I know for a lot of people it might mean nothing. Okay. For me it was everything because मैंने लिख दिया था book. और मैंने वो देखी रील भाई, कमाल. पहले मेरे को लगा फेंक रहा होगा, साले लिखा हुआ है, एक्चुअली लिखा हुआ है. मैं नोटबुक दिखाता हूँ, मेरे पास पढ़िए. I'm sure. मेरे पास 15-20 नोटबुक रही, उन सब में कुछ ना कुछ लिखा हुआ अल्टीमेटली. मैं सब में कुछ मतलब, और ना खुद में ही नोटबुक के एकदम स्टार्ट में मैं कोट लिखता था, गेट बेटर टुडे, आउटवर्क, लक इज नॉट गोना हेल्प यू, लाइक यू नो ऐसी चीज़ें. बीच में जो भी लिख रहा था, पढ़ रहा था, तो वो स्पीचेस या जो भी क्लास जा रहा हूँ वो अटेंड कर रहा था. और बैक पे ना मैं मैनिफेस्टेशन करता था. ये मेरा पैटर्न था, हर नोटबुक में तो दिखाता हूँ, देखेगा. ठीक है, बैक में लिख रहा हूँ कि IIM में मैं इन्वोकेशन दूंगा, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने इन्वोकेशन दी थी स्टैनफोर्ड में. कॉन्वोकेशन लग रहा है क्या भाई? क्रेजी ब्रो. राजीव मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, तेरे को पता भी नहीं है लेकिन तूने दे दी. हाँ देखा, पता भी नहीं है नाम पे जो दे दी. हाँ ठीक है, मैंने वो लिख दिया. फिर ऐसे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, मैंने उधर लिखा था इट इज, मेरे को उस टाइम ओपरा बहुत चलती थी, तो गाना था आई वांट टू बी अ बिलियनेयर. ब्रूनो मार्स आई वांट टू बी अ कवर फोर्ब्स मैगजीन है वो. राइट. अब मेरे को पता नहीं था फोर्ब्स क्या है, मैं लिख दिया फोर्ब्स के कवर पे आऊंगा. ठीक है, उसमें लिखता था आई वुड हैव शो लाइक ओपरा, आई विल बी द होस्ट. यार मैं लिख दिया इट इज पॉसिबल टू इंटरव्यू पीपल, आई विल कॉल टॉप पीपल. ऐसा मैं कुछ भी चीज़ें लिखते जा रहा. राइट. तो फॉर मी इट वाज लाइक अ बिग थिंग कि भाई 10 साल पहले मैंने गाना सुन के पगचौदी लिख दी, सही हो गए सारे, और सारे सबने डू ऑल ऑफ देम गॉट ट्रू. राइट. मैंने स्पीचेस दे दी, मेरा खुद का शो है जहाँ पे आई गेट who from the startup world. I think there's not even one podcast in the country. I tell you, फोर्ब्स मैगजीन और मनी कंट्रोल का लाइनअप मेरे से बेटर नहीं है. पॉडकास्ट मतलब इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यूज और पॉडकास्ट और लाइक कॉन्वर्सेशंस विद द startup founders. Like that is the kind of, like I'm so proud of it because my team has been able to pull off something really well. Okay, तो startups में specifically, not any other category. Right, हमने वो pull off कर दिया. एकदम crazy लोग ले, हम ऐसे लोग लेके आए जो मीडिया में आते ही नहीं है, वो बात ही नहीं करना चाहते किससे. उन्होंने bluntly 1000 पॉडकास्ट को, 1000 लोगों को, टीवी शोज को, सबको मना कर दिया. उन्होंने BBC को मना कर दिया और वो हमारे शो पे आते हैं. राइट. सो टू मी that's something strong signal, bro. It's a very strong signal, right? And तो ये सब हो गया. ठीक है, सब I was coming to the Forbes वाला thing. So it happened Forbes में मैंने मेरे भाई को इंदौर पहुंचा सरप्राइज, लाइक यू नो मैं बता देता आ गया हूँ, उसको बता दिया मैं दी बुक, मैं ये देख. उसने क्या हाँ बैठ यार गाड़ी में, रख दी पीछे, अब जब अकेला है तब दिखाना.
जब अकेले आए तब दिखा रहा क्रेजी ब्रो, लाइक नॉट इवन 2 minutes of celebration. उसको जब फोन पे बताया ना मैंने, he felt proud, he was so happy. बोले पता था मेरे को 100%. I'll show his chat. It's like अब रुकना थोड़ी है. Now it's your true test. Now that you've gotten everything, what you do now is gonna make sure that you actually become great. भाई वो मेरे से छोटा है, वो 3-4 साल छोटा है मुझसे. वो मुझे मेरी लाइफ में जो मैं मानता कि मेरी मतलब रियल अचीव मैंने फोड़ दिया, मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई. राइट. वो उसको 1 मिनट में खुश नहीं हो रहा, बोला ठीक है नेक्स्ट इज दिस. अब बड़ा करके दिखा और बड़ा ब्रो, ऐसे भाई चाहिए. तो मतलब ही जस्ट पुशेस मी सो मच. इट्स क्रेजी. इट्स जस्ट ब्रो, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स. नहीं, लाइक बेस्ट फ्रेंड मतलब जैसे लाइक is there a 1:1 male partner you have where it's like bro ये करना है अपने को, इस टाइप का कोई है तेरे साथ? या but you have friends like ambiguous? I think one of the biggest, this I tell you, it's a mistake and it's an advantage in life as well. I kept changing that best friend as I grew in my career. Okay. Why is that an advantage? So I tell you, that is a loss because you don't have a homie who's seen like everything, you know, and how you see US की series वगैरह, हर एक मतलब विनी चेस का ई होता है. I don't know if you've seen Entourage. No, I've heard enough about it, but you know, like हर एक सुपरस्टार एथलीट का या रॉक स्टार का या मैनेजर का एक अपना भाई होगा टाइप से. राइट. आर्टिस्ट का मैनेजर होता है, कुछ भी होता है, like they all है. तो because you don't get to share like the downsides and the emotions with people, that's why it's a sad part. It's advantage because you play with people who doesn't need training. You are not playing with amateurs. You're not playing with amateurs. You're not playing with people who don't know their shit. When it's your boy, when it's your man, or with your girl, or when it's like somebody who's, I'm specifically talking about business goals, okay? Specifically like जो मतलब फोड़ने वाली बात, तो इसका go getter goal वाला. They need to work, think, breathe, eat, consume, produce the same way you are doing, in order to level up the same way you are leveling up. Otherwise they'll be left behind. Okay. Now if primarily तुम ऐसे हो कि तुमको फोड़ना है जिस चीज़ में हो ही नहीं सकता दूसरा बंदा सेम में करे, तो जो तुम्हारे साथ वाला होता है तुमको एक टाइम बाद उसको थोड़ा लेवल अप कराना पड़ता है या कुछ सिखाना पड़ता है, या वो तुम्हें कुछ चीज़ें सिखाएगा, ऐसा होगा. बट एज यू कीप ग्रोइंग और हर साल तुम चेंज अप करते हो, तुम ऑलरेडी तुमसे एक लेवल ऊपर वाले से बात करते हो और वो तुम्हें लेवल अप कराता है. तो फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. व्हेन it was my FMCG business, I became best friends with someone who has already built a 300-400 crore business, right? And he was still under 30 and in FMCG in a state. तो मैं उसके साथ, वो मेरा गो गेटर हो गया कि भाई अब तो साथ में मिल के तूने कर लिया, सेम तेरे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को यूज़ करे, मैं फोड़ूंगा अब साथ में करने. ठीक है. But और different products, right? हाँ, कि compete नहीं हो रहा. Compete नहीं, right? ठीक है. Next, when I became content creator, I reached out to some other person, let's say Apurv, Ayushman, these guys are like, चलो ठीक है भाई, तुम लोग ऑलरेडी, तुम मेरे से 4 साल पहले से गेम खेलो, तुम मुझे रोज सिखाते हो, चल भाई एक साथ में फोड़ना है. तो वो अब साथ में फोड़ रहे हैं. देन आई वेंट टू माई स्टार्टअप गेम, फंडिंग, स्टार्टअप, बिल्डिंग, टेक प्रोडक्ट. उधर Apurv would have been incapable. Or my friend from the FMCG company would have been incapable at Apurv's job. Right? But my funding में अब जो मेरा वो co-founder, वो बाप है. The way he builds execution capabilities is crazy. Right? तो startup बनाने में हो गया. My funding के लिए the angel investors who helping me out with everything, I've become best friends with him. उसने गेम खेल रखा, वो खुद बिलियनर है. उससे बेटर किसको आता है पैसा रेस करना? खुद उसने रेस करके बना के खुद ने $1 बिलियन का धंधा बना लिया, खुद ने $1 बिलियन खुद के बना लिए. उससे बेटर किसको आता है? सो इट्स एन एडवांटेज इफ यू प्ले इन डिफरेंट रूम्स विद पीपल हु आर ऑलरेडी अबव यू, बट डिसएडवांटेज दैट कि हर गेम सही नहीं बनेगा. राइट? कोई गेम तो फ्लॉप भी होगा, और जब फ्लॉप होगा ना, तो जब पर्सन हु इज ऑलरेडी लेवल्ड अप, वो तो दूसरे को ढूंढ लेगा हेल्प करने के लिए. हाँ, तुम्हारे पास उसके लिए ट्रांजैक्शनल है ना, वो रिलेशनशिप उसके लिए ट्रांजैक्शनल है. हाँ. तुम्हारे पास कोई नहीं रहा. यू वोंट हैव अ ब्रदर टू क्राई विथ. I also think, bro, this is a sort of a geographical difference between being tier 2, which is where Faridabad practically tier 2, and tier 1 where maybe it's a Delhi Bombay difference, I don't know. Because हमारे यहाँ क्या होता है, bro, हमारे यहाँ तुमने एटलीस्ट मेरे साथ तुमने चुन लिए भाई ये हैं तुम्हारे लड़के. अब बस ये है, ठीक है, तुम कहीं जा रहे हो भाई, कोई दिक्कत तो फोन कर दियो, बट अपने हैं हम. तो
वो मेरे पास भी है. हाँ, वैसे लोग हैं, वो tier 2 वाली वाइब वो है. वो क्रेजी वाइब है, उसका अपना अलग दुनिया चल रही है. बट यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट इट इज हु यू सराउंड योरसेल्फ विद दैट यू एंड अप बिकमिंग. फॉर मी अ लॉट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड व्हेन आई टुक द एडवेंचर एंड आई वेंट अब्रॉड एंड आई सडनली रियलाइज्ड, bro, you might be the smartest person in every room you walk in Faridabad or even in Delhi for that matter, but this is fucking Columbia University. यहाँ तो तू मुंह भी कैसे खोलेगा, बिकॉज 18 साल का बच्चा आएगा बोलेगा बैठ अंकल मैं तेरे को बताता हूँ. एंड दैट पुश्ड मी टू लेवल अप वेरी मच, राइट. एंड आई सॉ दिस विद अ वेरी क्लोज, ऑलमोस्ट लाइक अ बेस्ट फ्रेंड फिगर. हम दोनों, both of us live in America on opposite coasts. He went to Georgia Tech, which is a tech school. And he came out completely different. He came out very entrepreneurial. Columbia में there is no entrepreneurship. I am learning entrepreneurship by talking to people like yourself and the others I meet through this podcasting network and such. फरीदाबाद में कोई धंधे की बात नहीं करता भाई. दिल्ली में जब आर्टिस्ट बनने निकलता है उसको स्टड बनना है. उसको नहीं बनना धंधा चलाने वाला आदमी, उसको चाहिए फॉलोअर. उसको ये नहीं है कि पीछे बिजनेस क्या है, आप कैसे ऑपरेट करने वाले हो, व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म विजन, नन ऑफ दैट. कोलंबिया में द करेंसी वाज आइडियाज. And that's why I got so good with ideas and articulation, because people are trading in that. A friend of mine would say, कहता भाई बाहर चलते होंगे डॉलर, यहाँ पे आइडियाज चलते हैं. यहाँ कीरकेगार्ड और काफका चलते हैं, यहाँ पे ये सब नहीं चलता. पैसे मत दिखा, राइट. दिखा तो कोई सकता भी नहीं उस जगह. पैसे पैसे तेरे को याद है हिलरी क्लिंटन आई हुई थी भाई. क्या हो रहा है भाई. हम लोग अपने उस पे बैठे हुए थे ग्रेजुएशन पे, राजवी भाई दिखाने की बात कर रहा है, वो भी कोलंबिया में भाई. उसकी फीस इतनी कि बच्चे ऐसे ही आते होंगे सब शॉर्ट छोड़. ब्रो एक मेरा दोस्त था, अभी भी है, पाकिस्तानी. तूने कभी सेंट एज के बारे में सुना है? सेंट ए कोलंबिया की सीक्रेट सोसाइटी है. okay. और सेंट एज का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सिर्फ एक है, यू मस्ट बी अ मल्टी बिलियनर. सो द टेस्ट इज, पहले तो तुम्हें एक सीक्रेट लेटर भेजेंगे तुम्हारे डॉम में, स्लिप कर देंगे जैसे प्रॉपर दिखाते स्कल्स एंड बोन्स वगैरह का. तुम खोलोगे एंड दे विल इनवाइट यू टू अ प्लेस फॉर योर व्हाटएवर ट्रायल रन हेजिंग. एंड द हेजिंग इज समथिंग लाइक बाय अ फर्स्ट क्लास टिकट टू यूरोप राइट नाउ, उसको फाड़ के फेंक दे, और बाय अ रोलेक्स राइट नाउ, उसको नदी में फेंक दे. दैट इज द क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन इन अ ग्रुप लाइक दैट. तो हमें लगता था रूमर्स हैं, क्या बकवास बात है. देन दिस फ्रेंड ऑफ माइन वन डे कॉल्स मी एंड ही इज सुपर सैड ब्रो. ही इज लाइक ब्रो आई थिंक, उसका खत्म हो रहा था कॉलेज करियर. ही इज लाइक ब्रो आई थिंक आई शुड हैव जॉइंड सेंट एज. एंड आई वाज लाइक ब्रो वेट, इज इट रियल? हाँ दिस इज रियल. तो तुम यूनिवर्सिटी में हो, तुम्हें तब भी नहीं पता ये रियल है कि नहीं. एंड आई वाज लाइक ब्रो जस्ट हाउ रिच आर यू? ही इज लाइक सॉरी ब्रो आई कांट टेल यू. सो आई आस्क्ड माय अदर पाकिस्तानी फ्रेंड्स. इट्स प्रॉब्ली द टॉप 5 richest families in all of Pakistan. So think about feudal country में top 5 richest होने का क्या मतलब है. And that is the crowd that you're surrounded with. And if you meet him, you cannot tell that, because he's so articulate and hardworking and all of those things. The values are fine. You'll find assholes also, but the values are fucking fine. But most of the people who I've met who are rich as hell are grounded and humble and hardworking. Generally tends to be the case. Mid-level जो rich होते हैं ना, वो assholes होते हैं usually. Because they're trying to be them. हाँ. Like जिसको पता है कि पैसा is not a constraint. हाँ. It's not like, तुम्हें पता है तुम पैसे से बड़ा नहीं बन सकते. So now because he's also not trying to win by money. People who know they can win by show off or money, or like, you know, by just, how do I tell you, by luxury. वो लोग और luxurious बनने की कोशिश कर रहे हैं. जिसको पता है कि इससे नहीं जीत सकते, क्योंकि उनका पूरा सर्कल सारे बिलियनर्स है, राइट. उनके घर में सब बिलियनर्स है, तो मतलब उनको कोई कुछ नहीं है. किससे जीत रहे हैं? पैसे से नहीं जीत रहे हैं. तो वो लोग जीतते हैं स्किल से, हार्ड वर्किंग से, आइडियाज से. वो गेम अलग खेलते हैं. द फर्स्ट टाइम आई मेट अ बिलियनर न्यूयॉर्क में, ही वाज 19-20, मतलब फैमिली बिलियनर थी ऑब्वियसली. हम पूरी रात हैंग आउट किए, जाते हुए मेरा जो कॉमन फ्रेंड है कहता है बाय द वे इसकी फैमिली ये है यूरोप में. एंड आई एम लाइक क्या बता रहा है भाई, अब कैसे बता रहा है? कुछ नहीं पता लगता ब्रो. बिलियनर खुद नहीं बताएगा. हाँ, उसको प्राइवेसी चाहिए ब्रो. ये मेरे को किसी ने समझाया था. द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास इज दैट बिजनेस क्लास पीपल वॉक थ्रू इट गोइंग टू इकोनॉमी. First class nobody sees. The seats are the same, the services are roughly the same. The point of buying a first class ticket is privacy. Yeah. And when you're that rich, what you care about is privacy, not about show off. Amplification's an obstacle. The true goal, and I don't, tell me what you think about it, is to not be famous. Like fame is a good leverage to have in the process of building your businesses, but eventually you want kind of people to not be looking at you, because bro, ज़्यादा देखने लगते हैं यार लोग. Like I think about all these Bollywood celebs going through the nonsense that they go through, even though they do not probably want to be involved. They want to make their art, bro. उनको सिर्फ अपना धंधा करना है, right? Like, but people are so invested in fame, you know. What do you think about fame? I don't know. I kind of disagree. अच्छा. I mean, the whole point is, so I tell you, एक point से last वाली तूने बोला था कि when you are in different rooms, currency changes, right?
every room you go to, currency Fame's a changes. currency. Spot Right. on. Yeah, you're Fame's a right. currency. Right? And it's So such an attractive currency also. People love you for it regardless. Exactly. So the whole point is which room you are in. Yeah. Right. In that room is fame being given importance. If in that room is money being is money important? In that room is idea important? In Right. that room is hard work or giving or I tell you, there are rooms in Bangalore, okay, where you're not an important person if you have a lot of money. You're an important person if you give a lot of money. So charity is an important currency there. Right? So you show that my dick is bigger by donating more. The whole point is, हर room की currency different होती है. तो तुम कौन से room में भी current operate कर रहे हो, that decides what is important to you right now. So to me, the kind of rooms I am in, I feel fame is an important currency. And I think it has so many advantages than disadvantages. I feel you. Maybe Right. that's a good character. Yep. So I can see that. that's the whole point. Because I feel that if you have the position where people are watching you or looking at you, you have so much room to create an impact in every goddamn way. That's a privilege. And that's the privilege I want. And maybe I'm saying this because I'm in the rooms where everybody is giving importance to, everybody values fame. Maybe the day I shift this, probably I'll get to the privacy wala thing. Abhi मैं first class वाले पहुंचा नहीं हूँ. Right. That's what I think too. Like, I'm pretty it's a sure brilliant tool. some billionaire is watching this and be like, "ये वे चल साले. क्या बात है, Famous. तुम क्या बता रहे हो?" हट कबाड़ी वाला. हट. I can see that. Billionaire mentality करे हमें बता रहे तुम हो कौन वे? Right. So I'm saying I'm not become that, so I don't know that yet. Tell me about your book, bro, because and this is probably the last question I have for you. I remember when I was finishing up and releasing my book, you were in New York, and I asked you, and you were like, "Book? I've not thought about a book." And then a few months later, your book was out. Whatever. How did that happen? No, I told you at that time also. Book for me is not a money making opportunity. We spoke about money there. Right. Right. Of So I course, was like, it's not a money making royalties and money is like, I said, book क्या है? I told you, book is an authority building thing. Tool, yes, right. Authority building tool. That's what. So that's what I see. Right? And one of the other things in my bucket list was become a bestseller. Right? Before I die, I wanted to become a bestseller. तो मैंने कहा ठीक है, बनना है, लिखेंगे. और उसमें ना मेरे को एक चीज़ बड़ी खुन्नस आती है कि यार मैं जो कर रहा हूँ ना अभी, वो स्कूल सिखाता ही नहीं है. तो मुझे इस पर लिखना था. तो मेरे को ना पोस्टर बॉय बनना था कि स्कूल ने जो नहीं सिखाया मैं वो बनाऊंगा. सो एवरीथिंग विच आई बिलीव दैट स्कूल्स शुड हैव टॉट अस and they didn't, that is what I've written in my book. So that's what I think about it. So I wanted to become an authority on, so I see myself as an educator. Okay. I educate people how to achieve their dreams. That's it. That's what in my head, my ideal positioning is. हर किसी के अंदर अपनी खुद की एक masturbation चल रही है, right? So my ideal masturbation You're getting is, sexual very fast, guys. I love this. So like my ideal thing is that, bro, I am an educator for dreams. Right? I teach people how to achieve dreams and I'm doing that by achieving my own dreams. So dreams achieve करने का educator मेरे को बनना है, right? तो अब जब मैं education ही दे रहा हूँ, तो ऐसी क्या चीज़ सिखा रहा हूँ जो लोग दूसरे नहीं सीख रहे, and उसका मेरे को authority बननी थी. So everything which they were not taught in school, I wanted to become that. So if you look at my every content, it revolves around optimism, imagination and emotion. ये तीनों चीज़ स्कूल में नहीं सिखाते. सिखाते तो टैक्स भरना भी नहीं है, वो भी सिखा. Bro, that's a hard skill. अच्छा. Okay. I'm telling you, अगर mindset है ना, तो ये तो हो जाता है. Of course, यार. Like वो तो मैं I was cracking this as a joke, but like trying to understand. Yeah. So my point is that then अभी मैं उसमें authority मेरी नहीं है, मैं क्या लोगों को बताऊँ? मैं खुद ही नहीं भरता अभी. टैक्स पूरा भरता हूँ, मेरे लिए मेरे CA भरता है, मुझे नहीं पता. हाँ, right. मुझे आता ही नहीं तो मैं क्या सिखाऊँ? मेरे CA को बनाना चाहिए इस पे कोर्स. I think वो जो पूरा argument होता है ना, वो schools should teach us how to do taxes is a lame argument, bro. Schools should teach you how to think about things. Exactly my point. My point is hard skill ना, तुम्हें ये स्कूल सिखा दे कि हार्ड स्किल जरूरी है काम करने के लिए, तुम खुद सीख लो. हार्ड स्किल ज़्यादा सीखना जरूरी नहीं है, ब्रो. Right. Thinking is more important. So I tell you, imagination, emotion and optimism is so goddamn important. And लोग देखो, imagination तो लोगों को पता है, बिना imagination कुछ नहीं होता. हम सोचेंगे नहीं कि यार कभी फोड़ेंगे कुछ मतलब कि ऐसा बन सकता है, तो बनेगा भी नहीं. So that's imagination. That people agree. Then second is emotion.
बिना इमोशन के तुम लोगों के साथ डील नहीं कर सकते, और तुम्हें कुछ भी बनना है तो लोगों से डील करना सीखना पड़ेगा. Articulate as hell. इधर वर्चुअली फिजिकली कैसे भी तुम्हें लोगों से डील करना ही पड़ेगा. सो इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड योर ओन इमोशन एंड पीपल्स इमोशन, राइट? दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. थर्ड आता है ऑप्टिमिज्म. अब इस पे बहुत डिबेट होती है. कुछ लोग बोलते हैं फालतू ऑप्टिमिज्म, रियलिस्टिक होना चाहिए, ये होना चाहिए. भाई कुछ भी बात है, ऑप्टिमिस्ट तो होना ही चाहिए. अगर तुम ऑप्टिमिस्ट नहीं हो ना, कुछ नहीं है. तुम अगर सोच ही नहीं रहे हो ना कि तुम में दम है, तो भाई नहीं है. जो ये ऑप्टिमिज्म वाला चिक है ना ब्रो, पता है इशू क्या है? जिस आदमी की बढ़िया चल रही है वो फालतू की ऑप्टिमिज्म देखेगा, बोलेगा टॉक्सिक पॉजिटिविटी. पर जो आदमी पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म की बात कर रहा है ना भाई, वो बात ही उससे कर रहा है जो टूटा हुआ है. और उसको उस टाइम पे व्हेन टाइम्स आर टफ, optimism is the only drug that keeps you alive. It's the only nourishment. Even when times are not tough, then you dare. Optimism is the only thing. Subconsciously तुम maybe देख, हर कोई ऑप्टिमिस्ट है. स्केल सबका अलग अलग. 1 to 10 में मे बी मैं 10 और मैं 12 ऑप्टिमिस्ट हूँ. कोई 2 होगा, कोई 3 होगा. इफ यू आर स्लीपिंग टुनाइट पीसफुली इन अ होप कि कल बेटर होगा, दैट्स ऑप्टिमिज्म. सॉलिड. हाँ राइट. नहीं तो छत नहीं गिरेगी, ऑप्टिमिज्म है. तुम ऑप्टिमिज्म, तुम रोड पे निकल रहे हो, ऑप्टिमिज्म, राइट? तो तुम्हारा स्केल 1 है. ऑप्टिमिस्ट तो सभी हो. मेरा बस नंबर 12 है, नंबर 13. मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज वाइट. इट्स रेडी फॉर अपॉर्चुनिटीज, रेडी फॉर मी. आई जस्ट नीड टू डिजर्व इट. मेरे को तो देने के लिए बैठे. आई एम यूनिवर्स चाइल्ड. लाइक दैट इज द बिलीव आई हैव. माई पॉइंट इज मे बी आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग. आई एम नॉट द यूनिवर्स चाइल्ड. कल मेरी मरने वाली बहुत बुरी, राइट? पर यार मेरे को सोच के डरना नहीं है. मैं तो I'll fight like a winner. Forget fight. जब वो हो भी रहा हो ना, मान ले ये मेरा बुरा टाइम चल रहा है. हाँ. ओके, मे बी मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ बुरा, और ये ऑल ऑफ दिस इज कंपाउंडिंग टूवर्ड्स समथिंग विच इज गोना किल मी. इस टाइम में मुझे लग रहा है ना मैं किल कर रहा हूँ यार. दैट इटसेल्फ इज अ गुड फीलिंग, दैट जॉय कि आई विल डाई वंस. इफ यू आर ऑप्टिमिस्ट, नो, यू विल डाई वंस. एंड इफ यू आर ऑप्टिमिस्ट, आफ्टर दैट यू विल प्रॉब्ली टर्न अराउंड दैट एज वेल, राइट? बट इफ यू आर नॉट एन ऑप्टिमिस्ट, यू Die डाई every एवरी डे. day. Spot on. And that's my problem with people who feel like motivation is not important, optimism is not important. भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है. आप नेचुरली ऑप्टिमिस्टिक हो तो ठीक है, वरना यहाँ से ले लो. राइट. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? नो ब्रो, लाइक अभी तेरे से मेरे को क्वेश्चन है, प्रॉब्ली तू शेयर नहीं करेगा ऑनलाइन. बता दे ना. नहीं, अबाउट द स्टफ व्हिच यू आर डूइंग एंड स्टफ लाइक. अच्छा हाँ, वो दैट विल डिस्कस ऑफ कैमरा. आई रादर लाइक टू कीप फॉर सम रीजन ब्रो. बट मेरे को एक बात बता, एक बहुत क्यूरियस क्वेश्चन है. हाँ. हमने 2-3 बार बात करी है, पहले ऑनलाइन, फिर उसके बाद हम उधर मिले न्यूयॉर्क में, अभी इधर मेरे घर पे इधर कर रहे हैं, राइट? हर बार तू कोई ऑब्जेक्टिव से आता है कि क्या बात करूंगा आज रात से? नहीं, पूछ इससे. जनरली ये रिसर्च करता है मेरे लिए. क्योंकि हर बार हमने कुछ अलग, हम जो फर्स्ट बात करना स्टार्ट करते हैं उसी में बात कर लेते हैं. इनफैक्ट हम जो पॉडकास्ट स्टार्ट होने के पहले डिस्कस करते हैं ना कि इस बारे में बात करेंगे, वो भी नहीं करते हम. नहीं करते. कुछ भी कहीं से भी चालू हो जाती, अरे ये अच्छा टूल है, चल यहाँ से स्टार्ट कर दे, राइट? सो that's your way. That's the art of conversation. No, that's what because I do that. Right. In my podcast, I don't research on people. I think there is it kills natural curiosity. To a certain degree, if you have too much researched, it will happen. But the opposite side is, if you do not know anything, what you look very blank. And we know podcasters that look very blank, right? So Raj as a person I know, and I know him on a level that is not say public, but jitni hamari interactions hai, right? I've understood Raj. The good part about talking to you is that you know how to talk, which is very often the problem when you're podcasting in India. It's not an industry, so people don't know how to communicate themselves, and you're having very dead conversations. You're trying to pull stuff out. You're trying to ask questions that open them up. They're tighter. They're worried about the camera. They're conscious. With you, none of that is the case. So what I do, for instance, if I'm coming to you, is I know I have to just pull the first thread and maybe force you through it. Like Andrew Tate might be a difficult conversation. So when I start and I see Raj is a little like whatever, I'll say, okay, Andrew Tate, I'll stick through it until you get comfortable. Then Raj will take this on. I just have to ask questions. True. Maybe if I have something burning to say, I'll add. Then Raj will do what he has to do. So with you and with most people, I come with very little agenda. The best I'll think of when I'm driving is where do I open the conversation. But while I was driving here, I was talking to my business guys जिनसे मेरे को बातें करनी है. So I didn't even think of that. हम इससे पहले जो बात कर रहे थे had no bearing on what we ended up speaking on after this. हम कोलंबिया की बात कर रहे थे. हम घूमने की बात कर रहे थे. Right, कार्ताहेना की बात. So with you it is very effortless. I don't have to try too much. But say if you were a more difficult guy, I'd do the same. I'd open with something deeply uncomfortable. I'd wait for you to get warmed up, and then I'd start throwing in easier things for you to continue talking. And the objective is to make the other person like themselves. This is the secret behind great conversation. If you leave the room thinking, bro, मैं तो फाड़ आदमी हूँ, you will love me, bro.
you will never hate me. True. That it's a power dynamics. Yep. You have, and people think I have to make them like me or I have to end up liking them. Both those things are so selfish. Make them love themselves. For sure. That's it. That's a question which I usually see ki in a podcast. If I've made my guest think about something which is not thought of, I've done a great job. If I made them articulate something they knew but did not know to put in words, they've won. They have won. Better articulation. Right. Yes. But I also feel कि रात को सोचने मजबूर होना और सोचे रात को यार ये क्या बोला था यार मैंने कि क्या हाँ कि मैंने क्या बोला था हाँ right. That is what my thing is कि something which I never thought of but मैंने बोल दिया उसे क्या बोला था यार. So that is my indicator कि I want to do that in a podcast. And India में ना podcast की ही problem है सबसे बड़ी. India में podcast hardcore interview है, podcast नहीं है. People don't wait for, let's say you're the host. In our conversation, we were equally talking. So there was a time when I was listening, you were talking, I was listening. Like, I was talking, you were listening. Like proper हो जाता. इंडिया में वो नहीं होता. इंडिया में हार्डकोर लोगों ने इंटरव्यू बना दिया है. वो करण जौहर रिपीटेड. हाँ. It's a करण जौहर फॉर्मेट. तो हार्डकोर इंटरव्यूअर वो पॉडकास्टर को बोलने नहीं देते. वो उसके लिए कोई रूम ही ओपन नहीं करते और खुद चुप हो जाते हैं. फिर लाइक सो दे डोंट. Some conversations are like that. Most of the conversations like that when you do it with people who are little, let's say, who are like little accomplished. Because they are like, उनको आज तक किसी ने ऐसी बात ही नहीं करी. उनके लिए ये एक let's say PR opportunity है. So वो इसको as an interview treat करते हैं और फिर दोस्तों के सामने जाके open होते हैं. Podcasting literally meant that कि यार दोस्तों के साथ तुम इधर आके चिल कर रहे हो, तुम कैसी बातें कर सकते हो. Precisely. Right? तुमने थॉट्स कैसे लाते हो जो तुम क्लोज रूम में करते हो ओपनली सबके सामने होना चाहिए. ब्रो पता है प्रॉब्लम उससे भी डीप मैं तेरे को बताता हूँ. पॉडकास्टिंग, सो दिस इज अ अमेरिकन रिप ऑफ राइट. पॉडकास्टिंग स्टार्टेड आउट इन द वेस्ट एंड देन इट्स मूविंग हियर. वहाँ पे ना पॉडकास्टिंग है, लोग ऑडियो पे सुनते हैं. यहाँ पे सब कुछ यूट्यूब नेटिव है. तो क्या होता है, तुम्हें डेटा मिल गया कि भाई अगर तुम फलान बारे में बात करोगे तो उस पर व्यूज आएंगे, तो मैं भी फलान सवाल पूछ लूंगा. मेरे को us because we're in the industry we hear back, हमें पता है back channels पे क्या हो रहा होता है. People will say this before conversations, be like मैं इस बारे में पूछूंगा, आप XYZ ABC बोल देना, right? Like so वहाँ पे I feel like it's too manicured and I'm no longer going to have fun, and this is not a means to an end for me. This is some part life still. When I'm talking to Raj and if I'm thinking अच्छा ये बहन जो बढ़िया content निकल रहा है, then I'm not having a conversation. I'm not. Have you seen my eye contact? Sometimes I'm surprised by my eye contact because I'm looking dead into your left eye. I'm like मैं वहीं देखता रहूँगा जब तक ये बोलना खत्म नहीं करेगा, right? And sometimes you can use that eye contact to intimidate and make the person stop. Sometimes to allow them to speak more. And these are things I've learned podcasting, bro. Yeah. My trade-off is the audience going to love if I talk about X, or am I going to learn 20 new things from this person if I sit down and listen to them? Same. So I think me, podcast is relationship building exercise. I agree, but I will say this, however, I think the podcasts that don't come out of Bombay are so much more like podcasts than the ones that come out of Bombay. I mean this at large. Except mine. Well, yeah. I don't think you come out of Bombay. You live in Bombay. But like for instance, Joe Delhi-based, like I think Vinamra does a fantastic job at having a conversation. Yeah, I love him. I keep saying this all one time. In fact, अभी मेरे को थोड़े दिन पहले कुछ विनम्र ने डाला दोस्त का. उसने rebrand किया है. Crazy. ठीक है. उसने डाला and I बोला मतलब दोस्त to the moon. Number 1 ये वो किसी ने लिखा. Somebody is like, hey, are you not competitor? अगर ये number 1 बनेगा तो what does it make you? I was like, bro, war में competition में नहीं है. This is not the same game. हाँ. Same game ही नहीं. उसका game है how do I bring best conversations out of people? Right. मेरा game है how do I understand the best playbook of achievement, of growth? ये दोनों game बहुत दूसरे हैं. Precisely. मतलब तुम क्या compare कर रहे हो? किसको compare कर रहे हो? And I was like, bro, what? And I'm sure, I was like, Vinamra, Prakhar और Raj, they are not competing with each other. 3 separate games. Like, I want to make the strongest possible people come out of this country. I want leaders out of this country, which is very different from yours, which is very different from Vinamra's. When Vinamra talks about his stuff, I in fact learn so much of my work ethic from guys who I am in direct competition with. You, Vinamra, I'll speak to Vinamra. He simplifies problems so much, bro. मैं बोलूँगा यार मेरे को नहीं पता if I should upload this episode. This was not. He's like, काम किया है ना, जाएगा online. And so if I had that competitive instinct, one, it would show. I will not ruin a 10-year-long friendship based on competition that visually appears to be competition. 2, this reminds me of what we were saying about that friend, right? I have that. I have that brother in Vinamra. We were friends जब हम बेवकूफ.com के पजामे पहन के यहाँ से वहाँ घूम रहे थे मैंगो लस्सी पीते हुए. And now we are friends when the world knows us when we walk into rooms. And it's insanely good to know that you've gotten
when Vinamra was trying to get his career off, I would invite him on streams. I would have him there. I'd be like, bro, you don't stop. When I was down and out, when I was going through shit, he called me. He's like, kya tension hai? Tu baap hai, bhool mat. And that is the kind of spine building support I wish all people have. Yeah. Bro, incredible. Guys like Apurv, मेरे को actually podcast पे अपूर्व की बुराई करनी थी बैठ के. मेरा बड़ा मजा आता है मेरे को करने में. Apurv has seen me before any of this was real for him or me, right? And when I speak to him, मैं बोलूँगा यार अपूर्व पका मत बहन. Like the conversation will start there instead of being like, oh, so sir आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है? It is so much more valuable to have relationships and conversations on that level than on the level of who's winning. It's so irrelevant. Yeah, true. And the pie is big enough. And I was just gonna come to that. कि I genuinely feel that we are blessed to be in a country जहाँ पे पाए बहुत बड़ा है. Huge. And especially we are in a game of numbers. तो इतने numbers हैं कि मैं कौन पॉडकास्ट है इंडिया में? मिथपैट करता है, ध्रुव करता है. मैं तो मिथपैट और ध्रुव तो कभी सुने ही नहीं है मैंने. खैर ठीक है, यू आर डूइंग, प्रखर इज देयर, राज इज देयर, विनम्र इज देयर, रणवीर इज देयर, अंकुर ने भी अभी स्टार्ट कर दिया है. सब मिलके सब एक दूसरे को प्रमोट कर ले और पूरा ऑडियंस खा जाए ना, फिर भी 400 मिलियन और बच जाएंगे. 500 मिलियन यूजर्स ऑफ यूट्यूब इन इंडिया. हाँ, फिर भी सब बच जाएंगे. मतलब अगर सब ने पूरा पाया. इंडिया का सबसे बड़ा चैनल कौन सा होगा? आई डोंट नो. टी सीरीज. आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल. कैरी मिनाटी कितना है? 35 कुछ मिलियन. तो 35 मिलियन ना. हमने 10 नाम लिए. 10 के 10 हो जाएंगे तो भी 350 मिलियन होते हैं. सब इंडिया के सबसे बड़े चैनल बन गए ना पॉडकास्ट के. उसके बाद भी हमारी 1.4 बिलियन जितना है यार. 1 बिलियन लोग और बचे रहेंगे जो इंटरनेट पे आने वाले हैं अभी. वो सब आएंगे ऑडियो पे. और तब पॉडकास्टिंग ऑडियो बनेगा इंडिया पे. मेरी प्रेडिक्शन कंटेंट को लेके है 23-24. यार ऑडियो भी नहीं है इंडिया में. ऑडियो कल्चर नहीं है. पॉइंट क्या बात कर रहा है? रेडियो ब्रो. यार रेडियो, आई टेल यू, रेडियो वाज देयर एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट व्हेन देयर वाज नो वीडियो. ओके, टीवी का प्रॉब्लम है बिकॉज टीवी एक फ्रिक्शन है खरीदने के लिए, राइट? यूट्यूब फ्रिक्शन नहीं है ब्रो. फोन पे ही अगर ऑडियो है और फोन पे ही वो है तो फोन पे लोग वीडियो देखेंगे. क्यों? ऑडियो कब आता है? जब तो यूएस में ना ड्राइविंग कल्चर है. यूएस में खुद की चीजें खुद करने का कल्चर. आई टेल यू सबसे बड़ा कल्चर का प्रॉब्लम. हाँ. यूएस इज अ DIY कल्चर, डू इट योरसेल्फ. इंडिया इज अ डू इट फॉर मी कल्चर, राइट? तो जब भी DIY होता है तो यू वांट टू एंगेज बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग एवरी डे योरसेल्फ. यू वांट, बिकॉज दैट इज बिकम लाइक ए subconscious thing. Many people think at that time, many people consume at that time. And that is US का thing. But if you think about it, bro, इंडिया में नहीं करते. And इंडिया में even if you look at any social class, any financial class, any city, any state, everywhere, the moment you can afford something, you want to make it do it for me. And तब तुम नहीं करते. But my contrapoint to that is that if you look at the number one YouTube channel is T-Series, is audio, is music, is for a reason, because the most amount of content that is being played is when I cannot look at it regardless. समझ रहा है? The masses are busy. They are the ones doing it for me. You see my point? And I think so. I see your point because but it's a source of entertainment. The source of education is very different than entertainment. I can see that. Right? I can see that. It's very different. And I tell you also, US was or is a country जहाँ पे लोग है ना डर नहीं है उनको कि हमारा होगा क्या. हाँ, सोशल सिक्योरिटी है. सोशल सिक्योरिटी, राइट? सोशल सिक्योरिटी इंडिया में प्रॉब्लम है. तो सुबह से लेके आदमी रात तक सिर्फ यही सोच रहा है कि मैं काम करूं पैसे कमाऊं, काम करूं पैसे कमाऊं. तो जब वो घर जाता है ना तब उसे एंटरटेनमेंट चाहिए. हाँ, राइट. यूएस में वो सुबह से शाम तक सोच रहा है कि सही है, बढ़िया चल रही है, हाँ, गाड़ी में घूम लेते हैं. तो वो 1 घंटा टाइम निकाल रहा है सिर्फ एजुकेशन के लिए. उसमें वो पॉडकास्ट सुन रहा है. इंडिया में 1 घंटा टाइम नहीं लोग कैसे एजुकेशन के लिए. तो तेरे को लगता है तू स्टैंड अप करेगा? यही खत्म कर देते हैं पॉडकास्ट ब्रो. थैंक यू सो मच फॉर आई एम सो ग्लैड आई हैड द बेस्ट कन्वर्सेशन. एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि ना शायद कर भी दूँ कभी अगर मेरे में स्किल्स हो. मेरे को आज लगता है मेरे स्किल है. अगर तू स्टेज के सामने खड़ा होकर बोल सकता है तो कॉमेडी इज एन एक्वायर्ड स्किल ब्रो. यू लर्न. यू मे नॉट बी द फनीएस्ट कॉमेडियन, यू मे नॉट बी जाकिर खान और ट्राई तो कर सकता हूं, बट यू विल बी फनी. आज नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा पर I feel कभी try तो कर सकता हूँ. The question is, put an implanted an idea. I'm thinking maybe. The question is whether you're 5 percentile or 0.1 percentile. उस केस में, because if you're 0.1 percentile, you'll be bussy. If you're 5 percentile, you can be funny on stage. That's it. That's all you have to be to do comedy, na? I think that public speakers are that. So I come in 5 percentile. I want to only play games where I can be 0.1%. हाँ, at least the first game I want to play. At least the first game I want to play is the 0.1% game because that's maximum leverage. And then I'll move to the 5% games to have fun. Like, I don't want to write books to sell. I want to write books to think. But if I do it right now, I'm a stupid idiot because I could be spending all that time and energy to build an empire.
and then we will write जितना लिखना है. Exactly. Right. Exactly. So leisure priority वाला- वो है. Yeah. So leisure वाला. जैसे मैं गिटार so I want to be a musician or an artist. Okay, in my head, like I told you, rapper बनना था, DJ बनना था, guitarist बनना था, Right. So I think at one point I might do that. और उसमें मैं I'll be okay कि मैं अगर बॉटम 10% में भी आ रहा हूँ तो मेरे को चलेगा. और क्या, मेरी एल्बम निकल रही है ना, बस मौज है. मैं खुश हूँ भाई. मैं नहीं भी निकली, मैं खुद में घर में बजा के खुश हूँ. ब्रो मेरे को तो म्यूजिक आता भी नहीं, तो भी मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूँ एक दिन मैं भी एल्बम निकालूंगा. क्यों? क्योंकि मेरे को एल्बम डिजाइन करने का कॉन्सेप्ट इतना फैसिनेटिंग लगता है. तेरा कवर आर्ट क्या होगा, तेरा एल्बम का नाम क्या होगा, और मैं सीख लूंगा म्यूजिक उतने दौरान में. रैप करना है, डीजे करना है, मैं सीख लूंगा. मेरा तो डिजाइन सब कर लेना, मैं म्यूजिक में आऊंगा. भाई ठीक है, लेकिन फिर हाउस म्यूजिक होगी, हाउस टेक्नो कुछ भी बना देना यार भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. मस्ती करनी भाई. डील हो गई, साइन करो टर्म शीट. चल ब्रो, गुड सीइंग दिस ब्रो. I'm very excited about this conversation. See you on the other side.